मेन, हाँ तुमने बोला तो एक में हम एक को यूज करेंगे बेसिकली बीच में यहाँ पर। Hello. Uh, I just request all of you to check the group. I have posted Wi-Fi name and password. So all you can connect your mobile phones with the Wi-Fi. I know network is low here. Wi-Fi name is Save Trees. Password I have posted in our group. कहाँ से बंद होगा? अच्छा, okay. I'll do one thing. वो पासवर्ड को यहाँ पे शो करना पड़ेगा। 1 मिनट कॉपी पेस्ट कर, इसको बंद करना दो फिर। जस्ट इसको बंद हेलो, I'll just show you the password. Just give me a second. इसको कनेक्ट डिसकनेक्ट यहाँ कैसे शो हो सकता है? कोई मोबाइल किसी का मोबाइल कनेक्ट हो सकता है तो मैं पासवर्ड कैसे बताऊं, क्योंकि यहाँ किसी के पास पासवर्ड एक मिनट कर रहा हूँ। ओके ओके। क्या चाहिए? पापा का लैपटॉप बाहर पड़ा है, बंद करो। बाहर ही है ना, बाहर। दो 2 मिनट देने के बाद
I'll request you all to please take a photograph of this so that we can start with the event. Namaste. Suprabhat, I am Shilpi Jain. and I am Rima Mundra, and We welcome you all. for your mobile application launch event, which is the Save Trees app. Today, we all are present here as a part of our app, Save Trees VC app, be it as a mentor, be it as a thought partner, or as a volunteer. Let's have a big round of applause for all of us. Now, Shilpi and all, I have a riddle. Let's see. Oh, I love riddles. I have no eyes, but I have witnessed the history unfold. I have no hands, but I can build a home. I have no heart, but I give shelter to many lives. I have no feet, but I can carry you to travel the world. Who am I? I think this is a tough one. Rima, at least give some time to think. We just had breakfast. Okay, Shilpi. Let's then proceed with the Ganesh Vandana. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया ओम गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया Now, let me repeat this riddle for you, Shilpi. I have no eyes, but I have witnessed the history unfold. I have no hands, but I can build a home. I have no heart, but I can give shelter to many lives. I have no feet, but I can carry you to travel the world.
Who am I? That's the good one. I genuinely got it. Have you got it? Anybody? Trees. Rima, let me tell you an interesting fact about a tree indeed. If we say one average tree, Rima, it can give enough oxygen to a family of four for a whole year. So, Shilpi, you mean to tell me that our app also helps us increase oxygen? Yes, you get that right. And there where our app, no, your app contributes to save trees. So, now proceeding with our event, we would like to invite Mr. Vikas Sachdeva to introduce and welcome our mentees. Let's have a big round of applause for him. Thank you. Uh, I'm a bit overwhelmed to be part of this event. कहते हैं ना कि एक सोच दुनिया बदल सकती है और हमने देखा है कि सोच किस किस तरह से दुनिया में परिवर्तन लेके आती है लेकिन मेरे हिसाब से सोच का सबसे पावरफुल आप कोई सोच पावरफुल है या नहीं आप कैसे जज कर सकते हैं आप एक चीज़ देखिए हम सब में सेवा भाव है हम सबको कुछ ना कुछ करने की इच्छा है कि एनवायरनमेंट को सेव करना है या किसी अंडर एजुकेटेड को सपोर्ट करना है कुछ ना कुछ सेवा भाव हम सब में होता है लेकिन यूजुअली समय का अभाव होता है एम आई राइट वी ऑल वांट टू डू समथिंग बट वी डोंट हैव द टाइम सो वी इवेंचुअली एंड अप डोनेटिंग ऑनलाइन करेक्ट लेकिन अगर एक सोच पावरफुल है तो सेवा भाव को समय भाव में बदल देता है और आज संडे के दिन जब हम सब यहाँ पर बैठे हैं इस सोच को सपोर्ट करने के लिए तो मेरा ये मानना है कि हम सब एक बहुत ही पावरफुल रेवोल्यूशन के अंदर प्रस्थान कर रहे हैं सो आई थिंक अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीपक एंड हिज एंटायर टीम फॉर दिस अगर हम दीपक की बात करें तो आज जो हमारे दो मेंटर हैं ये सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है और मेरा काम है कि इनको मैं आज इंट्रोड्यूस करूं इनका ऑफिशियल इंट्रोडक्शन भी है और थोड़ा सा अनऑफिशियल इंट्रोडक्शन भी है बट लेट मी स्टार्ट विद द ऑफिशियल इंट्रोडक्शन फर्स्ट although they don't need any introduction with your permission can I introduce you to people who already know you yeah okay so Nilesh Shah or Nilesh Bhai or Nilesh ji as we know him he is the group president managing director of Kotak Mahindra AMC he's led his team to the best fund house of the year award at all the mutual funds where he has worked all the mutual funds where he has worked चाहे वो कोटक हो चाहे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो चाहे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड हो आप लोगों में से शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि नीलेश हैज नाउ मूव टू द नेक्स्ट लेवल ही इज पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ही is also a member of the board of association of mutual funds in India and a member of COBOSAC committee of SEBI वो क्या है सर okay but for me, when I look at Nilesh, I can tell you that he's always been the same person for the last 3 decades. I still remember him traveling in Andheri local, me getting a seat next to him, and he's so engrossed reading his Times of India or Economic Times, I don't remember what that paper was, that I had to actually say, Nilesh, hi, you know, he was so engrossed. Still the same person, very down to earth, very humble. और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इनको भगवान ने गिफ्ट दी है भगवान ने गिफ्ट दिया है कि हिंदू माइथोलॉजी के जितने भी आपके स्टोरीज हैं चाहे पंचतंत्र हो चाहे पुराण हो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स आपको हिंदू माइथोलॉजी के स्टोरीज के थ्रू बता सकते हैं ही इज अ वेरी वेरी रिवेटिंग स्पीकर एंड आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ अस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग हिम टुडे बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम the other mentor is a very dear friend of mine Navneet Munor I have the sincere privilege of having worked with him. I've seen him grow through the years. We were together in Birla Mutual Fund way back in the day. But his official introduction is he's the MD and CEO of HTFC Asset Management Company Limited. He has close to 3 decades. I won't say 29, I say 3 decades. Looks better. 3 decades of rich experience in financial markets.
Prior to joining HDFC AMC, he was the Executive Director and Chief Investment Officer of SBI Funds Management Limited. He's been a key member of the Executive Committee and was responsible for overseeing investments worth over 150 billion across various asset classes in mutual funds and segregated accounts. He was also a director on the board of SBI Pension Funds Limited, Private Limited. In his previous assignments, he was the executive director and head multi-strategy boutique with Morgan Stanley and chief investment officer fixed income and hybrid funds at Birla Sun Life Mutual Fund. Navneet has a master's degree in accountancy and business statistics and is a qualified chartered accountant. He is a charter holder of the CFA Institute and the CAIA Institute. He has also done financial risk management. इसके बाद थोड़ा जगह खत्म हो गया था, बहुत और भी बहुत कुछ है. But for me, I can tell you what Navneet means to me. A very dear friend, a smile on his face, always. I've never seen him being under pressure. I've never seen him panic. But two things I'd like to tell you about him. Very few people know about the fact. आपको सबको पता होगा ETFs basically इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे 2001 में. लेकिन जो ETFs को जो बम्प अप आया था, जो सही मायने में प्रमोट किया था, आज अगर SBI म्यूचुअल फंड नंबर 1 फंड है, वो इसके लिए भी है क्योंकि ETFs में काफ़ी पैसा आया है. और ETFs को सिंगल हैंडेडली प्रमोट करने वाले, वर्चुअली सिंगल हैंडेडली प्रमोट करने वाले नवनीत मुनोत हैं. और ये कितना बड़ा रिस्क है मैं आपको बता सकता हूँ, बिकॉज थ्रू आउट हिज लाइफ he's been talking about active management and he's the poster boy for passive management. Okay, the other thing which I'll tell you, which I'm sure some of you know but most of you don't, and off late he's also started coming on Twitter, so I think you should follow him on Twitter also. Your fund is promoting you. बहुत मुश्किल से तो जना WhatsApp पे आए हैं. Okay, but मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बताता हूँ. इंडिया बुल जो आज हम लोग सुनते हैं ना, he has been a consistent India bull since 1995 that I've seen him work consistently. चाहे मार्केट ऊपर हो, नीचे हो, स्कैम हो. और नवनीत की एक बहुत खास चीज़ है, नवनीत लिखते बहुत अच्छा है, बोलते तो बहुत ही अच्छा है. अगर आप इनकी बात सुनना शुरू करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ 15 मिनट के अंदर जाके आप चेकबुक लेके इंडिया में स्टोरी में पैसा डाल देंगे. एक्सट्रीमली पावरफुल स्पीकर, एक्सट्रीमली बुलिश स्पीकर, टॉक्स विद डेटा. बट what I love most about Navneet is that he comes up with this note at the end of the year. It's called person of the year. Am I right, Navneet? And it is not necessarily person. It could be an event, it could be a person, it could be anything. And he writes so beautifully. He captures the entire year's events. For me, that is something I look forward to every year. See, everybody looks at publications ki Morgan Housel se kya aaya, isse kya aaya, usse kya aaya. This is one publication I look forward to every year, and he's been doing it consistently for so many years. So big round of applause for Navneet Dev. I'd like to now call upon Mr. Dogra to come on stage and give mementos. Big round of applause, Mr. Dogra, please. Thank you very much. I'd like to hand over to the dynamic duo of Reema and Shilpi to take it forward. Over to you. So, Nilesh, sir, as Mr. Sadeva said that you will tell us the new interesting stories about some mythology with finance. So we are actually looking forward to hear one of that. And Mr. Manoj, sir said that you have single-handedly handled the ETF promotion. So we are already proud that you are one of our mentors. We are on right track actually. Now, I would like to invite our visionary and mastermind behind this app, Mr. Deepak Mundra, to address the central theme of this event. Let's have a round of applause.
So I think before I talk anything about why we have gathered here, we should first launch the app. We have Aditya Garg here with us, and he has come with his wife only to attend this event. He has applied. He landed yesterday 11 p.m. and he has a flight to catch at 12:20 again. So he would be leaving in some time. So we want him to see, witness the launch. He is our technology lead. He is the first person whom I reached out to when this idea came to my mind. So I think Nilesh bhai and Navneet sir, आप दोनों इधर आइए and you will have to cut the ribbon digitally. So हाँ, Aditya bhai will say something about Aditya. You also come please. आपको यहाँ पे सिर्फ जाके एंटर मारना. आदित्य पे आ जाओ. अरे ऊपर तो आ जाओ. Thank you. Aditya, एक minute. So since Aditya has to fly back and he has to leave in few minutes, I would first request him to talk something about what he feels about this and what has been our journey so far. And let me tell you the biggest challenge what I have faced while working with Aditya. This is the project I've been working after office hours. So I reached to reach home only 8:39, and 9 is the time when this gentleman hit the bed. So first of all, as Sajdeva sir said, it's so really overwhelming to be part of this event and to be witnessing such a big thing. I think it's a very proud moment for all of us to see in the app made in Bharat. I think that gives me goosebumps. And to think like that, that's amazing. Actually. We have been using all these other apps made from other countries, and to come up with such an idea and to have Deepak sir do this and even talk to me that Aditya, we want to do this, gave me goosebumps. I said yes. See, I am in Aries and many of you would know he is an Aries as well. Okay, so Aries का ना दिमाग काम करने का है कि एकदम से start करो. You, all of you who know Aries would realize that we jump into action. But then he has a great quality that अगर सोचा है ना तो काम होके रहेगा. So big round of applause for Deepak sir. And as sir said कि to एक इतनी बड़ी सोच को लेके आगे बढ़ना, I feel proud. We all feel proud, and to be part of this gathering here is just amazing. And my wife Prachi, both of us feel very proud to be part of this initiative here, and we'll be always be connected. I feel personally that agar, just say for example, I was in a conference yesterday, and instead of sharing my visiting card, I showed my QR code. Look, उस कॉन्फ्रेंस में 80 लोग अटेंड कर रहे थे एंड 80 लोगों को इफ आई वुड हैव गिवन माय कार्ड, आई एम श्योर दैट इन नेक्स्ट फ्यू कॉन्फ्रेंसेज आई वुड सिंगल हैंडेडली सेव वन कार्ड, one tree in the sense, right? And one tree for 1 year, as we know, will also give us oxygen. तो मेरी फैमिली तो भी ऑक्सीजन फिर बोलते ना ग्रीन इनिशिएटिव और कार्बन नेगेटिव. इनफैक्ट आई हैव मूव टू जोधपुर, सोलर पैनल है, ग्रीन कार चलाता हूँ और अब सेव ट्री ऐप भी यूज करता हूँ. सो आई विल स्टार्ट प्रमोटिंग फुली सस्टेनेबल मॉडल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. और रही बात वो जो टाइम की है ना, आई विल टेल यू एन इंस्टेंस. नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज दैट वी गेट इनटू अ हीटेड डिस्कशन. सो 9:30 बजे वी गॉट इनटू अ डिस्कशन एंड फिर मैंने बोला सर 9:30 बजे मेरे से बात नहीं करना है. So we have stopped discussing this app after those hours. That is why sleeping time, and he appreciates that. So big round of applause for Deepak sir, and really thank you so much sir that I am part of this initiative. We'll take one more minute. Yeah. Since he has to fly back, would request our mentors to give him a memento for supporting the cause.
So I have a fear of him in night also and in morning also. He told me I have to leave by 10:15, and I think we are well within the time. So now I would talk few things which have come to my mind. But before I talk about anything, I want to show you a small video. Just 2 minutes. Bye. I am going for my business trip to Delhi. You're बोले मोबाइल है ना Your web checking friends मोबाइल है ना Your visiting cards अरे मोबाइल है हाँ क्या हुआ, आप भी चौंक गए? Our mobile app Save Trees VC enables you to stop using paper visiting cards completely. ना तो पेपर विजिटिंग कार्ड देने का, ना ही पेपर विजिटिंग कार्ड लेने का. Save Trees VC available on Android as well as Apple. First thing, Adya, who has played the professional in this video, is daughter of Amit Lahoti, who is our thought partner, and this is his brainchild and his creativity. Big round of applause for Adya and Amit both. So now the context, which was already known to everyone, what is this app all about? It is like saying no to give visiting card and saying no to take visiting cards. Now I have also coined a new term which is PSR. We all know what is CSR, right? It is corporate social responsibility, which is imposed by law, and all corporate will have no choice but to adhere to it. Now, PSR is personal social responsibility. No one can impose on anybody. I even can't impose on, even Nilesh Bhai or Navneet. I cannot impose. They cannot impose, even if they tell me it's my choice, it's my heart, if I follow. So I say CSR is imposed by law and PSR can only be imposed by heart. Now, there are several thoughts, in my mind. I do not have the timelines for that, but I have listed down few. You can see 2 blocks. These all provide a platform whereby we can contribute back to the environment or society. Green block is something which I call low hanging fruit. We can contribute to these things without doing much, without investing much capital, without investing much time. So Save Trees mobile app we are already working, and this is actually low hanging. किसी को कुछ ज़्यादा ना तो time देना है ना पैसा देना है. Commuting time if you can use, you can spread it, and when you use it you actually end up saving time. तो जो commuting में आपने time लगाया है उससे बहुत ज़्यादा time आपका बच जाएगा. Second is Save Trees. We will also, at some point of time, we will drive awareness drive. So, like we all use tissue paper on and off. Today, they had kept it tissue papers in the plates. We removed it. We said keep it on the side. If somebody wants it, we'll take it. Otherwise, let's ignore it. Earlier, they wanted to serve the breakfast also in paper plates. For each dish, there was a separate paper plate. So we literally had a fight with the management here. And that is how we got it replaced with the ceramic plates. When we go to washroom, we see people, removing tissue paper. Matlab, my blood start boiling when I see people removing thak 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 thak. एक बार उन्होंने मतलब हाथ धोया और 6 tissue paper चाहिए उनको साफ करने के लिए. We can address those. मतलब those also would have significant contribution if we can, have
awareness drive toward it. At least last more than a decade, I use only my handkerchief. Only unavoidable scenarios we use tissue papers, but otherwise I don't use. And I think it is all about making people realize that what you are doing is actually not correct, and people will follow. And to some extent, COVID also played a role, because after that people started looking at hygiene and all that. But that is the history now. So we will have certain initiatives to spread awareness. My next initiative, which again would be a team initiative, which is already thought. Blueprint is ready, timeline is not yet ready, which is like having a blood bank of rare blood group. I give you one example. My mother got operated in the month of January, and her blood group was O negative. On 30th January was the operation date, and 29th we were told by the hospital that O negative का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, but जरूरत पड़ सकता है और हमारे पास में नहीं है. So 29th I started checking. I couldn't find anybody who is ready to, who has a O negative and ready to come to hospital to give blood. Within few hours, I have a large broadcast list. All of you receive my message that I still exist once every month at least. So I use the same broadcast list, and I created a WhatsApp group which said O negative people should join it. And within I think 3-4 hours, I got 80 people listed in that group. And 3 people out of them actually came to Leelavati hospital and gave the blood. This is 30th January. After that, within next 6 months, I observed, though I was very passive in that group, I observed that 3 more people, they were looking for O negative blood. They could, get it in the group. That gave me a sense ki why not create it, similar type of a app which can have blood group made available to people who need it. And the idea is here we will have more of youngsters, because after 40-50, when BP, cholesterol, sugar, all that is there or is about to be there, we might not be able to give blood. So we have idea to bring in eligible donors, where we will have youngsters coming to this app. As of now, this is idea, but what I am trying to highlight is these are low hanging ideas which can have significant contribution impact on the society and environment. Likewise, at some point of time, we'll also start big yoga drive for all people, especially Mumbaikars who have a very good excuse कि हमारे पास में time नहीं है. So I have thought of something, but not consuming time now. But that also is something which would be low hanging fruit without much time and money. Useless plastic. Now, what does it mean to you? It has two meanings. First is plastic is useless. Second is, since it is useless, you should use less of plastic. So that also again would be awareness drive. We will have some program around it. We see a lot of food wastages across functions and all that. We would also have a drive to see how we can avoid that. Then the red one is where will you need a setup to have any initiative around it. It could be planting trees. It could be getting a substitute of plastic, or it could be like you create a setup where home for aged and orphanage can be brought together. So kids, orphan kids get parents, and parents get good company to live with, and the values also can be transmitted to these young kids. So these are the initiatives. There is a long list, but not in a hurry. I think this year we would focus more on safety initiatives, because this also has got a very good potential to give back to the environment. So coming to the preamble, now before that I would like to highlight that personally I am following what we are trying to do together. I have been doing it for more than 2 decades. Even when I was with Aditya Birla Group, Jayanta is here, he can witness. There was a card scanner on my cabin, on my desk. When people used to meet, I used to take the card, scan the card, and give it back. And that time also the idea was to save paper and save trees. After that, 10 years of Edelweiss, I followed the same practice. Nivedita is around, and I think she has been with me for in Edelweiss for more than 10 years, and she has helped me a lot also to do the same thing. For last 1 year,
1.5 year, 18 months, I have got a QR code which looks like this. Many people have started using it now. I paid 2,000 rupees to get this QR code. The underlying idea was to have your own digital visiting card and save money. Nitesh, my colleague of from my team JSW, is sitting here. He has witnessed it in all the meetings. I neither take card nor I give card. So I either give them my QR code and I take the card, and I've been using it and saving it. So I'm practicing it. And then I thought since I am able to practice it, and why not do it on some larger scale, involve masses. It's a low hanging fruit. And then it was 27th and 28th of June. So bring a round of applause for Dheeraj Khandelwal. He doesn't even know that he became source of inspiration for me to think big around it. So when I was also there for 2 days. He has arranged a conference, startup sphere, for 2 full days. I was also camped there with him for 2 days, and there were around 200 exhibitors. Out of 200 exhibitors, there were 40, 50 new ventures. They were doing things which had nothing to do with finance, and they were all chartered accountants. And since I was also there for 2 days, I met many of them, at least 40, 50, when sessions were going inside, and I used to meet these people in those 2 days. I didn't give my card to anybody, nor I, took card from anybody. And that is where each and everyone sort of engaged into discussion ki ye kya hai, why you are not giving, why you are not taking. Then I realized ki not many people are still using it. And they all, when they realized ki why I am doing it, I got lot of appreciation and praise. And those 2 days, 27th and 28th of June, after that week of July, that idea actually became a convertible initiative only on 27th and 28th of June. In July first week, then I reached out to Aditya, and he said ki Deepak, I am in, we can think something like this. And after that, Anurag Kataria, he is another finance person's transformed into a technocrat. I reached out to him. He is also sitting here now. So he also said ki yaar this is really sounding good, and I am with you, please go ahead. That is how we worked on this safety initiative, thought of making it a mini Jan Andolan, and that is how it all started. Now, hypothesis. I actually, nowadays Google plays very important role in our lives. So I also was Googling, and I learned that if 20,000 visiting cards is equal to one tree. And then another hypothesis I read somewhere was ki on an average one person give 200 cards in a year on an average. There are people they give more than 2,000 cards also every year, and there are people they give 150 cards also, but on an average the number was coming to 200. Now if a person is meeting someone and giving 200 cards, it means he is also taking 200 cards. So then if he stop using paper visiting card, so he would be saving 400 visiting cards every year. 50 people start doing the same thing, that would result into saving 20,000 visiting cards. So again 20,000 visiting cards is equal to one tree. So if you see our mobile app, on the home page there is a progress meter given which says how many people are the users of this app, and how many number of trees we have saved so far. So that so far calculation is coming from that hypothesis. Now, thought of some impact, we discussed it on thought partners meeting also. This is arbitrary, but again Google, I searched, I learned that there are around 30 lakhs trees in Mumbai. Then we thought, let's try to make our initiative contribution significant, and let's save 30 lakh trees over a period of next 10 years. So that is the aim we are keeping in mind. Now in terms of numbers, if we run our hypothesis, we need on an average 15 lakh users every year. Then only in next 10 years we would be able to achieve. So we are targeting that. We are targeting that, and I am sure with support of all. As of now, we have launched it only for Bharat.
we have idea to launch it globally also. So with once it is launched globally, I am sure we should be able to achieve what we are chasing to achieve. मजरू सुल्तानपुरी साहब का एक बहुत ही फेमस सेइंग है, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया. थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं इसको. मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, दोस्त साथ आते गए और कारवा बनता गया. मार्केट के दिग्गज हमारे साथ में बैठे हैं, मंच पे भी और नीचे भी. बट ये चार्ट क्या बोलता है आपको? ये चार्ट बोलता है मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स from the day I started, thinking about it. The more I met more and more people, say from June to July to August till September, this graph has been going up only. You can see it's, falling also at times. So this is my IT team which gave me, But really, matlab, the more I dealt with people, I have got a lot of encouragement and my satisfaction happiness index has been moving like this. When we started off, I thought I had few partners by that time. Then we thought ki let's we will make a group of around 10 or 12 and we'll try to do something passively whereby we can contribute something to the environment. Now I have few broadcast list. I drafted some messages, started circulating it. I was getting good response, and to my surprise, I must have circulated 4 or 5 broadcast message when this was in idea stage, and every time I got some positive reaction from Nilesh bhai. So then I thought what we are thinking, if Nilesh bhai also comes on board in a way, then our idea would get a big push. And when I created a WhatsApp group of lead volunteers, Nilesh bhai also joined that group. I then told him कि ये आपके लिए नहीं था, but then I also requested him कि अब आप join किए हो तो आप निकलना मत, नहीं तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा. So when the inclination was there from Nilesh bhai, I thought let's add him also to our initiative. But then I thought he can't be part of Thought Partners group. Obviously into a different league. Then that is the time I thought we'll create a mentor group also, whereby we get wings. This initiative get wings. And I met Nilesh bhai. आधे घंटे का मीटिंग था एंड मतलब ज़्यादा कुछ बात नहीं करना पड़ा. विदिन 5 minutes he gave me green signal. Then he also gave me a lot of ideas कि what else we can do. So one of the idea which I have written, which is in the red block, tree plantation and all that, was actually given by Nilesh bhai. So that is how we created mentor board also. So now the structure what you see today is mentor and patron board, where we have got 4 iconic names. Nilesh bhai was the first one. Anil Singhvi, he is not in Mumbai, so not able to join. Then Navneet. When he learned about it through Ajay Manglunia, then he called me and I think we had good 20 minutes ka discussion around it, and was very inclined. And I think what we are doing is nothing. I don't remember all what he's doing, but he is also engaged in so many activities whereby it is giving back to the environment. When we request him to come and talk, would also request him to cover those aspects also. And then Salesh Lodha. So I reached out to Prashant and Rakesh Shah, and this is all initial, I think September mid or so. And Rakesh Shah से बात हुई. He called me back in the evening कि मेरी बात हो गई है, तुम बात कर लेना. So and he doesn't. Salesh Lodha also doesn't use WhatsApp the way Navneet. I have seen him for so many years. He was not on WhatsApp. Salesh Lodha also doesn't use WhatsApp. So I dropped a message. 4 बजे राकेश शाह से बात हुआ होगा मेरा.
तो वो टाइम पे मैंने मैसेज डाला एंड देन इवनिंग अगेन आई डिडंट गेट एनी रिवर्ट, आई कॉल्ड हिम, आई मैसेज्ड हिम अगेन एट अराउंड 9 o'clock. जैसे ही सेकंड मैसेज गया विद इन 5 minutes ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी एंड आई वाज सेइंग थैंक यू एंड ऑल दैट. तो बोले यार मेरे को कुछ मत बोल, राकेश सर ने मेरे को कुछ मौका ही नहीं दिया. वो बोले कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे कंफर्म कर रहा हूँ. एंड I was so happy, and incidentally, all the three confirmation, Anil Singhvi, Navneet, and Salesh Luda, happened on the same day. It was a Sunday, so that day was, a very very bright day for our initiative. And Anil Singhvi also, we reached out. सबसे पहला Roop suggested कि we can have in our thought partner meeting. So Roop reached out to him. Then Ajay also, Manglunia also reached out to him. Then my brother Lalit also reached out to him. And then we were not getting revert. तो फिर हम सबने चारों ने मिलके एक बार घेरा, because he was so busy not able to revert only. So the day we all came together, within a few hours we got the confirmation. So this is our journey of mentor board. Now thought partner, I think we have got 33 thought partners. I started with 10 thought partners. That is what I thought. So few of you might have read my first note in which I had written we would be 10 thought partners. When I reached out to Nilesh bhai, वो नोट में मैंने लिखा था we would be 20 thought partners. So it is like I thought यार 10 से बात करूंगा तो 5 जने मानेंगे. But then whatever names I picked up, and I think I don't remember anybody took any time to be part of this initiative. So that is how 10 became 20, 20 became 30, 30 became now we are 33. So few things, like I met Vikas and we met for a lunch. So it was around 45-50 minute ka lunch meeting. And after lunch, he said something which I'm still puzzled, whether it was a compliment or something else. He said कि यार दीपक, लाइफ में पहली बार हुआ है कि 50 मिनट तक मैं किसी के साथ में बैठा हूँ और मैं कुछ बोला नहीं हूँ, सिर्फ सुन रहा हूँ. धीरज खंडेलवाल जी के साथ में डिनर मीटिंग हुआ था. मतलब एवरी थॉट पार्टनर, आई थिंक आउट ऑफ 33, आई थिंक 25 के साथ में 101 मेरा मीटिंग हुआ. धीरज खंडेलवाल जी के साथ में जब मीटिंग हुआ, ही वॉज कमिंग फ्रॉम गुजरात and he landed on airport, and then we met at Novotel close to airport. He heard everything, and then he was instrumental in changing my scale of thought. He said that what you are thinking is actually too small. We need to, he liked the idea definitely, and then he said that let's do something big and bigger. So that is where I actually thought ki let's make it now in a Jan Andolan. So my approach up till now has been, till I met him, was more like we reach out to individuals and create this as a platform for them to make it their PSR. And that is how people come and associate. Then he came out with several ideas, whereby then we realized ki, okay, this has idea has got the potential to reach to a level which we cannot even think of. So a big round of applause for him also. Paresh bhai. So I reached out to him. He is generally very busy, but always responsive. So we tried meeting each other. Matlab, I was trying to reach out to him, but we couldn't, was not getting time. On one Friday evening, I reached out to him कि यार के कल मिल सकते हैं क्या? तो then he said नहीं यार कल तो मैं busy हूँ. बोला संडे को मिल सकते हैं क्या? बोले नहीं यार संडे को भी मैं busy हूँ. It was 7:30 in the evening. मैं बोला अभी मिल सकते हैं? बोले हाँ अभी मिल सकते हैं. So then he asked me तुम किधर रहता है? मैं बोला I am in अंधेरी. बोला I am in कांदिवली. So मैं बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ. And to his humbleness, he said let's meet at a center point. And then we met at Westin. मैं बोला मेरे को आधा घंटा बात करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है वो डिस्कशन करना है. एंड मतलब टू माई सरप्राइज, एवरीवन सरप्राइज एट होम, वी स्पेंड 2.5 hours टुगेदर. 30 मिनट का टाइम मांगा था एंड 2.5 घंटे तक हमारा डिस्कशन चला. एंड देन बिकॉज इट बिकेम 10:30, we had no choice to part with. But he also has got lot of brilliant ideas with respect to, now I can say all those things can also come under PSR.
So likewise, the journey is long, but as I said, दोस्त मिलते गए और कारवा बन गया. Now we have also, created this three-tier setup whereby mentors are there to, give us guidance and, briefly navigate us how we have to go, where we have to go and all that. Second is thought partners, where we try to meet once every month, either online or in person. The third layer is lead volunteers. I think major of the people today sitting here, they are neither mentors nor thought partners. They are lead volunteers. So I created a WhatsApp group. They joined it there, and that is the reason, they all can come here and join. So all those who have come here, big thanks to all of them, and big round of applause for them also. ये किसमें लगेगा? चालू कर. So now I will also show you the demo of the app. What we have done is I would be running it in the mobile itself, and you all will be able to see it. Mobile किसका? मुझे पहले कनेक्ट कैसे करूँगा? इसको लगाएं. मैं लेता हूँ. So this is live streaming of this mobile on the larger screen. I am, trying to do things which all of you can observe, and if there are any questions or all that, we can also, address that. So how do you download the app? You go to your App Store or Play Store. You need to search Save Trees VC. To save trees, and VC stands for visiting card. Now I say install. Now while this is installing, let me thank you all the team members, volunteers, thought partners, mentors who are, actively engaged. Shilpi and Vivek Jain, they have become the core of this initiative, and especially for this event. Clapping is also good acupressure exercise. Amit Lahoti
and Kishan Kanodia. Matlab Amit Lahoti, many of you know, he is very creative person. The designing ideas, the what promo, what video I showed you. So big round of applause for Amit, and bigger round of applause for Kishan, because Kishan brought him to me. Both are actively contributing. Nitesh also sitting here on and off. I've been discussing with him, though we haven't spent together on this project, more. But thanks to Nitesh also, he has been party to my ideas. Now, Pawan Sodani, where are you? Okay, now बढ़िया लोग बोलते हैं बोनी अच्छी होएगी ना तो धंधा अच्छा चलेगा. So जो हमारा लीड वॉलंटियर्स का ग्रुप था, we were doing a post lunch walk in office. We are colleagues also. We were colleagues 25 years back also. So while we were walking, I shared the idea with him, and then वो group में he is the first person who joined the group. And from 1 to the journey of 640, I told him that day यार के बोनी बहुत अच्छा हुआ है. Let's see धंधा कैसा होता है. भौमिक शाह and Dinesh Thakur. कहाँ पे है दोनों? So they are like family friends. Everyone, all team members are like family friends. But I give them special credit because they are with me for more than 6 months. We have been thinking various ideas what we can do together. And on and off, there are times when we are discussing and Dinesh Thakur is sleeping also. So matlab point is, we meet at 9 o'clock and we discuss till 12 o'clock. Then he has one beautiful style. When he is falling asleep, he will sleep only with one eye at a time. थोड़ी देर में दूसरी आँख खोल देगा ऐसा. तो he do the balancing. Now today, registration desk, Rucha is around and Meha is around. The lead is with both of them to manage our registration desk. Originally, this was to be done by Amit Sikaria. He is an adventurous guy. I don't know what he did, but उसका कॉल आया मेरे पास में कि सर मैं उस दिन आ नहीं पाऊंगा because मेरा पाँव ट्रक के नीचे आ गया है. So I really couldn't gauge what is it. But then later on we realized that he got only a small hairline fracture. But for that reason he couldn't come. So then Meha is Amit's wife and Rucha. So they both took charge of it. Along with them, my daughters Rima's friends, Tulsi and Neil, they are also supporting. Then Pranav Maheshwari, Kunal and my son Uday. So there is a big team of 7-8 people, they are managing the registration desk. Shilpi introduced Chandini to me, and she said she is keen to become volunteer for this initiative. Many such names actually came forward that they want to become part of this initiative. She then was introduced and she took the charge of the entire breakfast management today. She ensured that we are not falling short of inventory. If there is a refilling required, she ensured that it is done quickly. So she has done a very good job. Sarvesh also has supported him. Anirudh also was, Anirudh Gotecha was also supposed to support her, but he's very smart. He reached only at 9:15. Now hosting, I can thank Shilpi and Rima both because they have been taking charge of the stage and doing a great job. We also have, when you all go back, there is a small token gift, which is a money plant. That also would be, you need to carry with you. And Saurabh, I actually forgot his name. I call him Bunty at home. So Saurabh Mantri, and all the thought partners now know कि Bunty का नाम is actually Saurabh Mantri. And Nivedita, where are you, Nivedita? She is still outside, yeah? So Nivedita and Saurabh, they helped us in a big way to manage this desk. In fact, Saurabh went yesterday night 11:30 to pick up all the plants to Borivali, and then he reached here at 7:30 in the morning. So all those people have now Nivedita has come. So big round of applause for Nivedita.
and Saurabh. So we have done it in short span of time. We have tried to manage this event also only with the support of this team. Otherwise, it would not have been possible at all. Thank you all. Thank you very much. I might have missed few names. So, and बचपन में भी बादाम कम खाया है मैंने. So you can forgive me if I've missed on few names. Our app also is now ready. I am now, you are all able to see this. The moment you start the app, it says thanks for being part of Save Tree initiative. Every time you will open this, it will thank you for that. Now there is a process. Now this is actually already installed earlier. So when you install it first time, you will get a preamble of the app. You read it for a minute. After that, you get terms, privacy policy and terms, which also you are supposed to read and then accept it. Now this privacy policy and terms of use is actually drafted by Pranav. Where are you, Pranav? So he is my bhanja, chartered accountant, working with PwC. He drafted it. Then it was approved, reviewed by Rucha Joshi. She is also sitting with us. She was also taking care of the registration desk. Then Vaibhav Mittal, partner Khetan and Company. He has also blessed our privacy policy and terms of use. So I am comfortable that we are in the safe hands. So thanks and big round of applause for three of them also. So once you agree to the terms, then only you can proceed. And the first window what comes is you need to log in. We haven't created it complicated. We have tried to keep it very simple. You use your WhatsApp number and you log in. The moment you the app asks for the WhatsApp number, you need to provide your WhatsApp number. The moment you give your WhatsApp number, one OTP is generated, and you go and check your WhatsApp, pick up that OTP, put it here, and then you are logged in. All data remains on server only. Your app remains light, because we have features which, if we keep everything on the mobile app, it would become very heavy. So we have kept it light. Second is, agar aapka mobile kabhi, if the mobile is lost, or if you are changing your mobile, there is no hustle to shift the database. Even when we use WhatsApp, it's a big problem कि iPhone वाला Android में चला गया तो tension है, and vice versa also is a tension. Backup करो, restore करो. What we have done, we have made it very simple. You have to just log in. एक बार आपने Apple से login किया, absolutely fine. दूसरी बार आपने Android से login किया, absolutely fine. So we have kept that way. It is very simple. Only thing is कि if there is no internet, you will not be able to use the app actively. But that also will not hamper your work what you are doing. So once you log in with the OTP, then you get 2 pages where you need to provide the inputs. Once you put the input, then first page is your basic information. Second page is your social media profiles. I will show you that now. Now this is already configured, so I am not able to take you through that path, but I have explained it to you. Once you have defined it, and if you want to, now I am taking each and every feature which is available on this screen. First one is, it is interactive. So here the user, if he put his name, it will come, thanks Amit for being part of. So it is greeting the user and thanking. Second is progress meter would be there, users would be there, tree saved would be will be there to let you know what has happened so far in terms of our mobile app. Then I am going to the top of extreme right corner, which is 3 lines and which is like a menu. I am clicking that. It says update profile. Now you can see the red circle. Here you have the option to pick up your pic. It's optional. Everything is optional in this app, except when you log in, you need to give WhatsApp number, and second, you have to give your name. Barring that, all features are optional. So if you want to do quick registration, आपको login करना है, अपना नाम डालना है, save करना है, and it is configured.
So with the with the circle you can click, it will take you to the gallery. Amit का phone है, मेरे को पता नहीं उसका gallery में क्या क्या pics है, so I am not opening that, but you understood the feature. Now likewise, the box below the circle, there are two boxes. One is scan front of the card. This is your own card because you are defining data for the QR code. If you see the top of this page, it says data for the QR code, and there are two such pages. This is the first one. You scan the card of your own with the help of this. Let me see if I can show you that. So I am using some card just like that. I've clicked you. They are asking for the permission. So I've given the permission. So you can see I haven't clicked anything. Automatically the card is captured. Now whatever details are there in the card, to the extent our OCR, which is Microsoft OCR, which is one of the best available OCR in the market, this will read the contents and put it in the respective fields. Now let's see what it has done. Now in this case, क्या हो गया? You notice that graph, right? Where there were some dips. इतना नहीं कुछ. So some glitch again, something went wrong. I don't know what is, but the moment you capture this, then generally the first name, surname, designation, mobile number, email ID, everything will come here automatically. Now we have added two fields here. When the person is sitting in front of you and you are scanning the card, your option, the first block is birthday. If you are comfortable taking the birthday of the person, you can actually ask. Females generally will not give the year, but date and month also still can be taken, and that can be saved. Then you see the last field, which is a free field. Generally we all what we do is when we meet someone, like if you are meeting someone today, you can put a reference. If you are someone meeting someone for the first time, you can put free field ki save tree app launch mein mile the, so you can put a small remark, save tree app. So whenever you are trying to retrieve, there is a feature search field. Usme if you write this, if you write save trees, you will be able to retrieve all the cards which is written like that. Like when I joined JSW induction week, I met say 110 people. Now it's not feasible to remember all the names. What I did, with every name I added JSW. So this is the free field meant for. You are free to use it for whatever purpose you want. And then when you retrieve the data, you will be able to use the free field and retrieve the data. Likewise, front is there and back also is there. Now when you scan a card, it gives you two options. You can see the dark green button on the bottom. The first one is save in the app. This is meant like, this is like a draft. You have scanned it, but you have not checked the hygiene of the card, and in front of person, you don't want to spend time to check the hygiene. वो time पे आप इसको mobile का app में save कर दीजिए. Once you are able to do the hygiene check and all that, that time you can actually go and say save in contact and app. So now it is saved in your mobile contact phone book also, and in this app also. So I referred something ki since this is on server, if internet is not around, you will not have access to this. But if you have saved the data in your mobile is with you, so that data would always remain available with you, but in a less bulkier manner.
So this is how, and there is one more thing here which is we will go to page 2 also. So name is mandatory field that has to be there. So anyway, I will explain this. So second page is nothing but your all social media profiles. So what is little tricky for people, they don't know how to bring social media links here. So it's simple, like if you go to Facebook, I'm giving you an example. If you go to Facebook, you click on your own profile picture, then you see three dots below your own picture. If you click on those three dots, it would open your profile ka link, and below the link it would also say copy link. You can copy the link from there. I can see at least less old people, younger people are nodding their head. They are able to understand how to copy. I'm sure they must be doing it. So copy your link from there, and then come to the respective field. It could be Facebook, तो Facebook का link चिपका दो. LinkedIn है तो LinkedIn का link चिपका दो, and so on. You can define it. Now, after once you have saved your profile, after that you have this QR code ready. Now the beauty of this QR code is the first box below the QR code says select field to be shared with QR code. Now all of you use WhatsApp, right? And all of you also forward the contacts on WhatsApp. So when you forward a contact on WhatsApp, वो आपको सारे field दिखाता है. You can tick what all field you want to share. Likewise, here also, you will, all the input fields will be shown to you, and you can tick or untick. Whatever you don't want to share, you untick that. If suppose you are meeting a formal person, comfortable only sharing LinkedIn profile and not your Insta or Facebook, you can untick that. And what will be shared in the QR code with the other person would be your normal profile plus LinkedIn profile. So that functionality is there, and every time you can, when you share a QR code, within less than 30 seconds, you can actually go and tick or untick what you want to give. Now the second box below QR code is if you are not meeting someone in person, but still you want to share your coordinate with someone. So you click on this. Now your mobile app will show you options how you can share. You can share it on WhatsApp, you can share it on Twitter, you can share it on email ID. So there are multiple options. This is your phone ka feature. This is not our app ka feature. This also you can share. So exactly what will go to the person with QR code, same thing will be shared in this manner also. And the third box is when any new person is downloading the app and he also want to become a volunteer in this initiative, we have created a WhatsApp group. The third box is all about that. He can click on this and it is like it will take you to joining a new WhatsApp group. You can see this. So I click there, and this is a WhatsApp group which has been where the new person has now landed. So we have our team of volunteers. They would guide these new people how to work with how to work as a volunteer to be the part of this initiative. So this is the third thing. Scan card is somewhat similar what we saw in case of scanning our own card. Likewise, we can scan the card here. Most of the field would automatically go in the respective fields. You need to check the hygiene. If you are comfortable, you can save it in the mobile also. Otherwise, save it in the app. Once you check the credentials, that time you can save it in the app as well as mobile also. Now there is a card holder feature. So here again, since there is no data in it, card holder feature would show you all the cards what you have saved in this app, and there are four buttons on the top of it. The first one is the date.
If you click on the date, it will sort all the cards in the date order. The last one would come in the last, and the first one would come in the first. The second button is the company name. So the moment you click on the company, it would arrange the card alphabetically. So Axis Bank would come on the top, Z Business will come on the bottom. The third button is first name. If you want to sort the cards on the basis of first name, you can do that. And the fourth button is surname. That also can be done. Then there is a search field, as I told you. In the search field, the moment you type anything, it could be free field, it could be name, it could be surname, it could be anything, whatever you like. When you open a Word file or Excel and there is a search ka feature, it works exactly like same. You put it and it will retrieve that particular card जिसमें ये word काम में लिया है. If there are 10 cards जिसमें वो word काम में आया, तो it will show you the 10 cards. So that also makes it very convenient to use it. So this is about QR code and scanning card and also card holder. Now in menu, the second button is about us. So preamble and idea, our mentor details, all thought partner details, putting these details give lot of credentials to our initiative and give lot of comfort also to people, and also showcase who all are, actively supporting this initiative. Now help and support, if you go inside it, there is one section which is tutorial, which we have to yet to put. We are planning to put video tutorials, so it would be in the form of FAQ, question and answer. There would be question, there would be answer in text, and there would be answer in the form of video. So common issues would be can be reviewed by video, because video is more effective in learning compared to text. Now if you go to contact and help desk, it will straight away open your Gmail or whatever email configured in your mobile, and you can directly write to support@SaveTreeBC. Any suggestion, any feedback, any issues. We do not have any setup, so we can't take the calls and assist people. But on email this would be recorded, and generally on weekends this would be responded back also. Then this is very important feature. This is settings. If you want to delete the account, you want to move out, you can delete the account. All your database from the server also will be deleted. You have option to delete completely. This was originally not envisaged, but Apple, iOS being Apple, they don't give the permission if this feature is not around. Android, we got the permission within 7 days, and Apple took I think 4 weeks to get us the approval. Many such smaller things, and Anurag has been witness of that journey. Many small issues were raised by Apple, and this is one of them. So they wanted portability option and delete option. So we inbuilt that also. Second option is, if your mobile number has changed, simply go there and change your mobile number. Same process. The moment you give your new WhatsApp number, you will get an OTP on the new WhatsApp number, and you would be able to retrieve all your old data in the new number. No harassment of backing it up and restoring and all that. So we have made it also very simple. Now there is a feature of backup visiting card, which is basically bringing all your data into Excel. So the moment you go there, it will dump a Excel file to you, which you can save in your laptop or computer, and you can use it the way you want to use it. Now, most important feature. If you start using this app, would request all of you to rate this app. The moment you click it here, it will take you to the Play Store where our app is listed, or App Store where our app is listed. So once you put it to use, give your honest feedback and rating there.
and then the logout. So I think I have explained all the features of our app. If there is any specific issues, so we have a team of you can see we have a team of around 15-20 people here. So once our event is done, all would be around here for next say 30-40 minutes. If there are any issues you are finding in configuring the app, or any issue in terms of learning and all that, we are all here to help us, support us. Once this stage program is done with, we would be open for that. हो गया? Okay, this is now done. Now we'll change my laptop again. So I explained the team structure earlier. Before that, some important aspects. So we have gone through the app now. Now the most common question where there is apprehension coming from friends, because so far this is open only to friends in the form of mentors, thought partners and lead volunteers. The most common question which I have faced is about data security. So would like to talk about that. Our first thing is, when it comes to IT, I am like Nilvata Sanata, to be honest. So I've been relying on my friends, Aditya, Anurag. Then we have few more friends, either sitting on thought partner side, or sitting on lead volunteers, sitting there. And we are getting active feedback from all of them. Vipin also is there, so he is also contributing a lot, towards it. Now, so collectively we thought about, the data security issue, and then we thought let's go to the best of the server provider. So we have opted for Amazon server, which is the best in the world as of now, which has got multi-layer encryption system. So data leakages from their server, agar Amazon ke server se data leak hua to fir anything is possible. So we have ensured that there is no data leakages from the server side, and we have opted for the best. If you read our privacy policy, it clearly says we have no intention now or in future to monetize by selling the data. That also gives a lot of comfort to the users that we will not sell the data to anybody. That is not the intent. Our intent is to use this platform as PSR. Will we use the data somewhere else? Answer is yes. I talked about blood bank of rare blood groups. So that is where all the people registered here in this app by default would be part of that app also. So that type of, like bankers sell insurance policies, we along with Safety initiatives, we will also make pull people for other initiatives of ours. But barring that, there is no data which would be sold to anybody. Now that should give users comfort. But then a very relevant question which I put across to all of you: what data we are referring to? Now tell me honestly, how many cold calls all of you are getting? Every day I get at least 10 and 12 cold calls. Any person, right? And I am sure President of India also might be getting several cold calls, right? So there is no way we can escape. What I have done, I have stopped taking calls from unsaved number. Rather, I have a predefined message which says your number is not saved in my mobile. Please text if anything urgent, and that is working fine for me. But the point is, we are all getting cold calls. Now, the data which is captured in our app, what are those data? First of all, it is your social media profiles. So social media profiles are what? Social. Now, ideally, anybody can reach out to you. We also get several of fake invites on Facebook
and all that. Many people reach out to us on LinkedIn and all that, but that people can do otherwise also. So Salesh Alloda has come. A big round of applause for him and welcome. Sir, आपको इधर आना है. You have to be. You have to be here. You have to be here. Please welcome. So everyone has been eagerly waiting for you. Thanks for making it. Shalesa has come yesterday night very late, landed to Mumbai. But thanks for making it. So we were talking about, I continue Shalesa with this, and I think we will do your welcome also once this is, no. so, so what data we are referring to is our, something which is there on our visiting card, and something which is there available in the social media. We don't keep any confidential data here, no KYC, no bank account details and all that. So one should not be worried at all. So I think with all these aspects of data security, you should have the comfort that nothing is going to go wrong from in terms of data security. Now one important thing where people actually got scared, QR code, how the QR code is scanned, you all know that? So one is generally the camera is unable to read your QR code. In Apple, it is seamless. In Android, 70-80% cases it is seamless, but in few cases the camera is not able to read it. Then the simplest option is to open your Paytm and transfer funds. Not like that. You open your Paytm, and with the Paytm, when you read this QR code, you will exactly get the same URL which you will get from the camera. So everyone use UPI, right? Paytm, GPay सबके पास में है. So if for some reason किसी का कैमरा नहीं function कर रहा है, is not able to read the QR code, they can open Paytm or GPay and open the URL through that also. So that also make use of this data very seamless. But then don't worry, you are using Paytm, but security is not at stake. Now generally we say it is win-win for all. I have used here, it is win for all. Why I have used the win 4 times? Because we are contributing to Mother Nature. So it's a win for environment. The user is becoming much more efficient in terms of contact management. The user himself is very happy about it. QR code gives much more information, is capable of giving much more information than what a traditional visiting card can give. Flexibility to choose what you want to share with the other person. And the recipient of your QR code also is able to save it in his or her mobile then and there. So they also become very organized. Otherwise, 80% of the cards which are exchanged are mostly misplaced. So that way the recipient also is very happy. And your lala is also very happy. Uska paisa bach raha hai. Matlab, it is a small amount, but think of MSMEs and all that, it still could be, of some significance. So the cost is also saved. So that is the reason I am calling it win for all. Now, Salisha also is not, properly briefed on our initiative. He knows, few things about it, but not many. So I will, at the cost of repetition, will just repeat the, team structure here. So we have a 3-tier, team here. The first one is yours. We call it a patron and mentor board. So where Nilesh Bhai is there, Navneet is there, you are there. Sir, generally people, learn about it when we ask for money. So and Anil Singh. So we have 4 members on, patron and mentor board. Then there are 33 thought partners. I am one of them, and all are sitting here in the first and second row. Prashant also is part of, thought partner. So we are the thought partners. We meet more often, at least try to meet either in person or on Zoom meeting or Google Meet once every month types, where we decide how to take it forward. So far, today is the day we are actually launching the app. So far, we were working on the beta version of the app, which was launched 1 month back on 7th of September. So for each and every thought partner now,
he is supposed to create, she is supposed to create own lead volunteers team. So the people sitting here, out of them, say 3 are say from the mentor and patron board, say 30 are from thought partner team. Out of 170, 80 here, remaining people, 145 people are the lead volunteers. So there is a WhatsApp group which was created where we, encouraged, requested people to come on board and become part of this initiative. So most of the people, majority of the people sitting here are the lead volunteers here. So this is the structure we are following. Now we want this to be converted, this initiative is to be converted into a mini Jan Andolan. That is where everyone's role could be very significant. So I've been saying your insignificant contribution in terms of time on collective basis can be a very meaningful and significant contribution to the environment. That is the initiative all about. So we intend to make it a mini Jan Andolan. How we will make it is like each and every thought partner. I have created a lead volunteers group, and in that in 3 months I got 600 plus people in that group. So likewise, everyone would try to make their own lead volunteer groups, and in my case, says out of 600 people, when I request them, each one would make their own lead volunteer group. So just to play with the numbers, say each one of them is able to make a WhatsApp group where there are say 50 people. So 600 into 50, the number is 30,000. So this is level 1. Now lead volunteers also would urge and request their WhatsApp group members to create their own, assuming वो level पे effectiveness समझो 10 का हो जाता है, 50 became 10. So 30,000 into 10, still the number could be like 3 lakh. So the one person is able to create a volunteer group of 3 lakh people, and 33 members, and then on top of it patron and mentors. I think it has a potential to take the number to what we are actually aiming at. So we can easily reach to say 1 crore users ka number within a year or so. So that is what we are trying to achieve. And generally it is said ki try to reach get moon. If not moon, you will get stars. So if not say 1 CR, I am sure we will reach to a mark of say anything between 1 lakh to 10 lakh. That is what we are aiming at. Now, significance of zero here. What we are asking people is zero consumption of office bandwidth. आपको ऑफिस बॉस का गाली नहीं खाना है, okay, लाला का भी गाली नहीं खाना है. Don't use your office time to spread this. When you will use it in office for data management, that is fine. But to spread this, we don't want to use your office bandwidth at all. It is zero hijack of your family time. You have to spare quality time with the family the way you have been spending up till now. There is no ask about it. And zero financial commitment. So everything is zero. Now the question is, तो time आएगा कहाँ से? Now, in my case, what I did, and I want everyone to follow the same thing, is I have used only my commuting time to create my lead volunteer group. And since all of you have been part of this lead volunteer group, you must have witnessed either it is early morning or generally evening when I either commute to office or when I commute back to home. So I want also all of them to use just commuting time is good enough to convert this initiative into Jan Andolan. And that is what I am urging everyone. आपको पैसा नहीं देना है, आपका ऑफिस का टाइम नहीं देना है, फैमिली का टाइम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बट व्हेन यू कम्यूट स्पेंड 10-15 minutes फॉर एटलीस्ट फॉर अराउंड 10 days and you would be able to contribute in a significant manner. Now exactly करना क्या है, मतलब once you have created the group, what you are supposed to do, you, like I have been requesting in that group to all of you, start downloading the app, give your feedback. You have to do the same thing with your volunteers there in the group, and we need to convert it into a chain involvement. So
your lead volunteer, ask him to create his own volunteer group, and that is how we want to convert this into a mini Jan Andolan. So that is the only thing you are supposed to do. Now, when you meet people using and you say कि मेरे को आपका card नहीं चाहिए, I am scanning it, or you give your QR code to the other person would get a URL in his mobile or her mobile, which also would have one button which would say download our app. So you can ask the other person, can you please download, and you can also be paperless when it comes to contact management. So that is the only thing you are all supposed to do. आओ मिलकर पेड़ बचाए, व्हाट्सएप को हम काम पे लगाए। आओ मिलकर पेड़ बचाए, व्हाट्सएप को हम काम पे लगाए। अरे वाह, लेकिन कैसे, ये तो बताओ। बहुत सिंपल है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने एक मोबाइल ऐप बनाई है। इसमें हम क्यूआर कोड से डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, मतलब के पेपर विजिटिंग कार्ड देना बंद। हमारे पास कार्ड स्कैनर भी है, मतलब कार्ड लेना भी बंद। बहुत बढ़िया, अमेजिंग आइडिया है ये तो। पूरी बात तो सुनो। सिर्फ पेड़ ही नहीं बचाता है, बल्कि लोगों को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी बनाता है। सोशल मीडिया शेयर करने का ऑप्शन भी देता है और कॉस्ट भी बचाता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी ऐप है। मुझे और भी कुछ करना है क्या? यस यस, व्हाट्सएप को भी तो काम पे लगाना है। आपको ये वीडियो सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करना है और आपके व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे भी सर्कुलेट करना है। ओह, तभी इसका मीनिंगफुल इम्पैक्ट होगा। मैं अभी इसे हर जगह शेयर करता हूँ। आओ मिलकर पेड़ बचाएं, व्हाट्सएप को हम काम पे लगाएं। This is not just a mobile app. This is a mini Jan Andolan. Available on Apple, available on Android. So Neha Kabra, where are you? So she is the one who has made this video for us, part of our volunteer team. Thank you, Neha, and one more big round of applause for her. The voice is given by Rima and Uday, my son and daughter. That is how collectively we have made this video. And this offer also came, from their side. If there is anything to be done, we can be of any help, please let us know. So I think with this, I have completed whatever I wanted to convey and say. Thank you very much for your, patient hearing. Thank you very much. Now handing it back to Shilpi and Rima. मैं अकेला ही चला था जनाबे मंजिल, मगर दोस्त साथ आते गए, कारवा बनता गया. So we heard that when Deepak sir started using this QR app and QR visiting card, it was a challenge. But now we just have to use this app, and with the basic practice, like it is as simple as using Facebook or Instagram, and that too data backup ka koi tension nahi. So can I expect like each and everybody is now using a app from now onwards? So, one more thing we can promise today to all of us here is that one thing my dad mentioned is the wastage of tissue papers in washrooms, toilets, to dry our hands. Let's make a promise and not use tissue papers, use handkerchiefs when and wherever it is possible to avoid. Now would request Rakesha to come and welcome Salisha. Please. So good morning, Jai Jinendra.
So first of all, thanks to the entire team of Deepak for this wonderful app and wonderful initiative. I think ये बहुत ही बढ़िया सर्विस टू दी एंटायर, नॉट ओनली टू दी नेशन बट टू दी वर्ल्ड. हर आदमी को जोड़ा जा सकता है क्योंकि पूरा काम ऐप के थ्रू है, तो वेर एवर ही सिटिंग ये काम किया जा सकता है. सो माई लिमिटेड रोल टू इंट्रोड्यूस शैलेश लोढ़ा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि हमने कभी ना तो प्रेम से बात की है, ना कभी सही जबान से बात की है. वो भाषा तो बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम बात करते ही नहीं, हंसते ही रहते हैं. सो सब जानते हैं. सो आई थिंक अगर हिंदी को अगर पूरे विश्व में अगर वो जो आज सम्मान मिल रहा है, तो आई वुड गिव क्रेडिट टू वन एंड ओनली शैलेश लोढ़ा. क्योंकि ये एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं नीलेश भाई, कि जहाँ अपनी भाषा गई वहाँ आपके घर से संस्कृति गई. तो ये मैं बहुत जगह बोलता भी हूँ और एडमायर भी करता हूँ. एटलीस्ट गुजराती, पंजाबी, वो अपने घर में आज भी मारवाड़ी, गुजराती गुजराती बोलता है, पंजाबी पंजाबी बोलता है. थोड़ा बहुत हमारे ये जोधपुर वालों में घर में हम हिंदी बोलने लग गए, बाकी हम मारवाड़ी बोलते हैं. सो ये बहुत ट्रू है. आप इनके मुंह से कभी सुनेंगे कि अगर आपके घर में आपकी लैंग्वेज चली गई, आप अपने बच्चों के साथ आपकी लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं, तो 99% यू विल लूज योर संस्कृति. बच्चे या तो हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, और वो आपकी ना लैंग्वेज बोलेंगे, ना आपका धर्म सीखेंगे, ना कुछ नहीं सीखेंगे. तो ये इनके बारे में कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं. इनकी जो माँ की कविता है, ये मेरे ख्याल से पूरे साल में 365 दिन में कम से कम 30-40 दिन विश्व में, मतलब आउट ऑफ इंडिया जाते हैं और हिंदी काव्य पाठ करते हैं. जहाँ अपन हिंदी में स्पीच देने में घबराते हैं, वहाँ ये हिंदी काव्य पाठ करते हैं और साथ में मारवाड़ी भी बोलते हैं. तो ये इनका परिचय है कि अगर इस लैंग्वेज को कोई बचा के रखेगा तो भगवान इनको बहुत लंबी आयु दे और इस लैंग्वेज को बचा के रखे और इसका प्रचार प्रसार करते रहे. बाकी रेस्ट इज ऑल अवेलेबल ऑन यूट्यूब एवरी डे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड एक्सेप्टिंग अवर इन्विटेशन. वैसे मैंने चांस दिया ही नहीं था, हाँ, क्योंकि मैंने बोला जैसे ही पूछेंगे तो पैसे की बात पूछ लेंगे, वो अपने को देना नहीं, इसलिए मैंने वो. थैंक यू. आई नो इट्स बिन अ लॉन्ग मॉर्निंग, बट आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा टाइम अपने थॉट्स कहना चाहूँगी. मैंने कहीं पे सुना है, कहीं पे पढ़ा है दैट ड्रीम इज़ नॉट जस्ट समथिंग यू गेट इन योर स्लीप. ड्रीम इज़ समथिंग दैट एक्चुअली टेक्स योर स्लीप अवे. आई हैव सीन दिस, विटनेस दिस फर्स्ट हैंड. हम सब ने एक्सपीरियंस किया है. My dad is someone who needs sleep at least 7 to 8 hours a day, and that has gone to 4 to 5 hours a day for the past 3-4 months. And he has worked day and night to get this app together, to get this thought together. It makes me really proud. We as a family had a tradition that we used to go on long drives almost every weekend, कम से कम 3 बार महीने में. It was our tradition. For the past 3-4 months, it's gone. He's been so busy, it's gone. Morning office के लिए निकलेंगे, रात को आएंगे around 8 o'clock, and then he comes and works 2-3 hours continuously on the app. He tries to make it more creative, more effective, as much as possible, as much as innovative, as much as user friendly it can become. I'm really happy to be a part of it, and I really, really hope you, everyone present here, and the future or potentials, everyone will be happy to join this initiative, this Jan Andolan. I would like to invite Mr. Nilesh Shah to share his thoughts.
So, first of all, very good morning to all of you. And thank you, Deepak Bhai, for starting this. अगर अंधेरा दूर करना है तो दीपक से शुरुआत करनी चाहिए. एंड यहाँ पे तो अपने दीपक भाई चालू कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ ज्वाइन हो जाना है. बेटा, आपने कहा था कि माइथोलॉजी की बात करना, तो शुरुआत वहीं से करता हूँ. महाभारत का ये प्रसंग है. युद्ध की शुरुआत के पहले भगवान कृष्ण दुर्योधन के खेमे में जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते कि युद्ध मत कर, इसमें लाखों लोगों की बलि चढ़ जाएगी. एंड दुर्योधन उन्हें ना कह देता है. भगवान कृष्ण फाइनल ऑफर रखते हैं कि सिर्फ 5 गांव दे दे, मैं पांडव को मनवा लूंगा. और फिर भी दुर्योधन कहता है कि मैं सुई की नुक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा. भगवान भगवान है तो छोड़ते नहीं. और फिर दुर्योधन फाइनली ये कहता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति. ओ भगवान कृष्ण, आप मुझे ये मत बताइए धर्म क्या है, मुझे मालूम है, बट मैं उसे फॉलो नहीं कर सकता, प्रैक्टिस नहीं कर सकता. और मुझे ये भी मत समझाइए अधर्म क्या है, मुझे सब मालूम है, बट मैं उसे छोड़ नहीं सकता. सतयुग में भगवान कृष्ण भी दुर्योधन को समझा नहीं पाए. ये तो कलयुग है. कृष्ण भगवान तो आने से रहे, तो दीपक शाह से ही काम चला ले. हम सब बिजनेस कार्ड्स यूज करते हैं, टिश्यू पेपर वेस्ट करते हैं. आज एक मौका मिला है कि हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा बेहतर दुनिया छोड़ के जा सकें. तो लेट्स इंश्योर दैट दिस बिकम्स अ जन आंदोलन. जितने लोगों को हम कन्वर्ट कर सके इस मुहिम में, अपने लिए अच्छा होगा, अपने बच्चों के लिए उससे भी अच्छा होगा. So let's control everyone's Duryodhan, and we all create this small Deepak whereby trees can be saved and environmental can be better. Thank you. Thank you, sir, for that. I would like to. Okay. Sir Salish Lodha, sir, please can you come on the mic and share your thoughts? नमस्कार. यहाँ इस मंच पे आने के पहले तक मुझे पता नहीं था कि मैं पैट्रन हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ सिद्धांत है कि मैं जब व्यावसायिक तौर पे जब कुछ काम करता हूँ तो मैं बहुत उस मामले में पर्टिकुलर हूँ, लेकिन जब दोस्त मुझसे कुछ बात करते हैं तो फिर मेरे पास कोई सवाल नहीं होते. राकेश मेहता मेरे जघन्य किस्म के मित्र हैं. तो उनका फ़ोन मेरे पास आया, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मुंबई से बाहर कहीं था, कहीं शो था मेरा. तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा, और मैं हाँ भर चुका हूँ. तो मैंने कहा फिर मुझे सूचना ही दे रहे थे बस वो. तो मैंने कहा ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है. प्रशांत चूँकि मेरा स्टूडेंट भी है, और फिर दीपक जी ने मेरे ऑफिस में भी सारा संपर्क किया. अगर आप मेरे बारे में थोड़ा जानते तो शायद मेरा नाम नहीं चुनते, क्योंकि मैं आइए नंद साहब, मनोज साहब भी आ गए हैं, नीलेश जी, बहुत बढ़िया आपने उद्धरण प्रस्तुत किया. आप वैसे ही कहते, लास्ट में बोल लेते, कोई दिक्कत नहीं थी. तो मैं कह रहा था कि अगर आप मेरे बारे में जानते तो मेरा नाम नहीं चुनते. मैं थोड़ा बागी किस्म का हूँ शुरू से ही.
मेरे विचारों का समाज से कभी साम्य रहा नहीं। मैं धारा के विपरीत बहा हूं बहुत बचपन से। तो मेरे विचारों से आपको बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी जब मैं प्रकट करूंगा। प्रशंसा निश्चित तौर से विचार की होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जितने आंदोलन पैदा होते हैं वो विचार से ही पैदा होते हैं। दुनिया का कोई आंदोलन कोई व्यक्ति पैदा नहीं करता, वो विचार पैदा करता है। दुनिया के सारे पुनर्जागरण जो हुए वो हथियारों से नहीं हुए, कलम से हुए। जब शब्द उठा, शब्द की पुकार उठी, कविताएं रची गई, कहानियां रची गई, कथाएं रची गई, नाटक रचे गए, जो विचार होता है वही आंदोलन उत्पन्न करता है। और कोई जन आंदोलन मिनी होता ही नहीं। जो जन आंदोलन होता है वो जन आंदोलन होता है। और आंदोलनों को वो जो आप समझा रहे थे कि पहला लेयर ये है, दूसरा ये है, तीसरा है, तो मुझे लग रहा था वो नेटवर्क मार्केटिंग का सेमिनार चल रहा है कि आगे ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है। लेकिन ये विचार बड़ा महत्वपूर्ण है जो आपने कहा। पर एक छोटी सी बात से शुरू करते हैं कि हम लोग, मैं रास्ते में अभी जब आ रहा था सोच रहा, जब अंदर घुसा ये मैंने सब देखा और प्रशांत को मैंने पूछा बाहर कि मुझे समझा 2 मिनट में कि क्या है सारी चीज। राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में कुछ साल पहले, जिला है ना बाड़मेर, तो वहां पे बहुत साल पहले अभियान चलाया गया रोड सेफ्टी के लिए, जो ट्रैफिक पुलिस चलाती है। तो उस जमाने में सीट बेल्ट जो है वो कारों में होता था, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता था कि इसका क्या किया जाए। मतलब ऐसा हो जाता था आप सालों बाद कभी खींच के लगा दे तो जो शर्ट के ऊपर एक पट्टी छप जाती थी, उसमें इतनी धूल जमी होती थी। तो उन्होंने एक रोड सेफ्टी के लिए आंदोलन किया कि भाई जो भी इसके लिए अब चलाएगा करेगा उसको हम इनाम देंगे। जो आज पहला आदमी हमें मिलेगा जिसने सीट बेल्ट लगाई भी होगी तो उसे हम इनाम देंगे। तो एक व्यक्ति, उसका परिवार, पत्नी और माँ, मतलब माँ और पिता और बैठे हुए थे और वो गाड़ी मिली और पुलिस वालों ने देखा सीट बेल्ट लगा हुआ तो रोका। बोले भाई कमाल कर दिया, तुम पहले आदमी मिले हो जो आज सीट बेल्ट लगाए हुए, हमारी तरफ से आज इनाम है इसका, तो 500 रुपये हम इनाम देना चाहते हैं। अरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करोगे इस 500 रुपये का? बोले सर लाइसेंस बनवाऊंगा। इतने में माँ इधर से बोली कि साहब कुछ नहीं, दारू पी के कुछ भी बोलता है, इसकी बात पे ध्यान मत दो। पिता पीछे से बोले चोरी की गाड़ी है, जल्दी निकल ले। हम लोग वही हैं। हम सीट बेल्ट लगाने का पाखंड कर लेते हैं लेकिन हमारे पास लाइसेंस नहीं। हम कहते हैं विजिटिंग कार्ड यूज हम नहीं करेंगे। जिस हॉल में बैठे हैं सर्वाधिक लकड़ी का प्रयोग उसी हॉल, जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं सबसे ज्यादा लकड़ी उसमें लगी। जिस कार्बन को छोड़ते हुए आप पेट्रोल और डीजल की एसी गाड़ियों में यहां तक आए हैं, और जितनी देर ये एसी चलेगा उतनी देर में क्या होगा इस पर्यावरण का। मैंने कहा था ना, मुझे सुन लेते तो कभी नहीं बुलाते। मैं हूं ही बागी। मैंने कभी वो बात नहीं कही जो लोगों ने सुननी चाहिए। मैंने वो बात की जो मैंने सोची और जो सुनानी चाहिए। मैं आपकी तालियां बजवाने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें कह सकता हूं कि ठीक है। मैं आपके इस विचार के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं, आपके पैशन के लिए। लेकिन हमें हमारे भीतर झांकना चाहिए। आंदोलन स्वतः स्फूर्त पैदा। सबसे पहले तो इस देश में व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को यह सिखाना पड़ेगा। हमारी इतनी इंडिविजुअलिस्टिक, हमारी व्यक्तिगत अप्रोच रहती है चीजों में। अगर व्यक्तिगत अप्रोच नहीं होती तो कोविड इस तरह से स्प्रेड नहीं होता। हमें लगता था हमें क्या फर्क पड़ता है, हम मास्क नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा मास्क लगाना हमारे लिए हमें मुसीबत में डाल रहा था। हमें यह मतलब नहीं था कि उसके लिए दूसरे से मुसीबत हो सकती है। हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तो स्प्रेड नहीं होता। आप देखें, अगर हमें दूसरे की चिंता होती तो आप बिल्डिंग्स में देखिए, ऐसा आदमी कभी नहीं करता अपने फ्लोर पे लिफ्ट होल्ड करके खड़ा हो जाता, और जब तक 4 लोग आ रहे हैं, जब तक उसे ये पता नहीं है कि नीचे वाला इंतजार कर रहा होगा। बिकॉज वी डू नॉट वरी अबाउट पीपल। हम लोगों के बारे में सोचते नहीं है। जब इस देश में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता तो पर्यावरण के बारे में कैसे सोचेगा? सबसे पहले तो आपको उसे ये सिखाना पड़ेगा कि हमें सोचना है, हमें इसके बारे में। आप अपने बचपन को याद कीजिए ना। आप लगभग, हम लोग समान उम्र के लोग होंगे, कुछ मुझसे बड़े कुछ मुझसे छोटे। आपके बचपन में आप कब
मिनरल वाटर का यूज करते थे? आप कब टिश्यू पेपर का यूज करते थे? ना आपने टिश्यू पेपर का यूज किया, ना आपने मिनरल वाटर का यूज किया। कब आप फर्नीचर खरीदने इटली जाते थे अपने फ्लैट के लिए? कब आपके घरों में ड्राइंग रूम का सोफा अलग होता था, लिविंग रूम का सोफा अलग होता था? ये सब हम ही ने तो बढ़ाया है। ये बढ़ाने वाला कोई और बाहर से तो नहीं आया, ये हम ही ने बढ़ाया है ना। टिश्यू पेपर का यूज हमने बढ़ाया, मिनरल वाटर का यूज हमने बढ़ाया, नंबर ऑफ फर्नीचर्स एंड आर्टिफैक्ट्स हमने बढ़ाया, कोई और नहीं है। एक विजिटिंग कार्ड से कुछ नहीं होने वाला, बदलना विचार पड़ेगा, भावनाएं बदलनी पड़ेगी, और इस विचार को आपको आपके भीतर स्वतः स्फूर्त पैदा करना होगा कि नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा मुझसे नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। हम लोग वो लोग हैं जो 2 पैग लगा के शराबबंदी पे भाषण देते हैं। हाँ देखिए, आपकी कैपेसिटी तो मुझे नहीं पता थी। ये विचार पैदा करना हो। ऐप, देश का 80% सच गांवों में बसता है, जिसे ऐप का अर्थ नहीं पता। हम अपने समाज में, अपने लोगों में, पढ़े लिखों में, जानकार लोगों में तो ये चीज कर लेंगे, जरूरत कहाँ है? और जरूरत वहां उस विचार को सीड करने की, बीजारोपित करने की है कि तुम्हारा ये भाव सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। क्योंकि देखिए, आप आने वाली पीढ़ी की चिंता तो आदमी तब करे ना जब उसे अपनी चिंता हो। आज हमारे देश में आने वाली पीढ़ी की चिंता का सिर्फ एक ही स्वरूप है, इकट्ठे कर लो, बैंक में रख दो, म्यूचुअल फंड्स में डाल लो, शेयर्स में लगा दो। मोहम्मद साहब सॉरी, बाकी से कुछ भी चलेगा। हमारे लिए आने वाली पीढ़ी का मतलब सिर्फ धन है, हमारे लिए आने वाली पीढ़ी का मतलब जीवन नहीं है, सिर्फ धन है। जब आपको ये महसूस होने लगा कि भाई ये करना सिर्फ मेरे लिए, भविष्य तो छोड़िए ना, भविष्य की हम बात ही नहीं करते, वर्तमान के लिए आवश्यक है। लोग खूब बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, बारिश की जगह धूप आ रही है, धूप की जगह बारिश आ रही है, बारिश के नीचे बर्फ गिर रही है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। और आंदोलन पैदा होंगे आपके भीतर के इस स्वतः स्फूर्त भाव से। वो जब करेंगे आप फैसला कर लीजिए कि वो वैसा मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जीवन में फैसला करते हैं कि हम अन्न नहीं खाएंगे, ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे, मैं जानता हूं कुछ लोगों को जो अन्न नहीं खाते, कि सिर्फ हम लिक्विड लेंगे या पिएंगे या कुछ कर, ऐसे बहुत सारे फैसले होते हैं। जब हम धार्मिक कार्य करते हैं हम कहते हैं कुछ देर के लिए हम नमक छोड़ देते हैं, कुछ के लिए ये छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं। हम तमाम चीज़ों की कसम खा सकते हैं, सौगंध खा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे धर्म से जुड़ा होता है। लेकिन हम हमारे जीवन को, पर्यावरण को, धरती को, मुफ्त में जो हमें चीज़ें मिली है, सूरज हमें बिल थोड़ी देता है रोशनी का, इंद्रदेव हमें बरसात का कोई पानी का बिल नहीं देते, वायु का कोई बिल नहीं आता, तो जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं है हमारे लिए। मालूम है ना, ये तो सबके लिए अवेलेबल है। अब कल क्या होगा छोड़ो, हमें आज की चिंता नहीं है। तो जब हमें इन चीज़ों की परवाह ही नहीं है, तो जब परवाह होने लगेगी तब हम शायद कुछ कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये भीतर परवाह पैदा करें और लोगों को ये बताएं कि ये आवश्यक क्यों है। उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है। आज़ादी की लड़ाई एक दिन में तो नहीं हम आज़ाद हुए थे। 1857 में जब संग्राम हुआ मेरठ की उस छावनी में, और वहाँ मंगल पांडे ने जब पहली बार विद्रोह का स्वर उनका उठा, और उसके बाद न जाने कितने लोग शहीद हुए, कितने फांसी पे चढ़े और कितने लोग चले गए। 1947 में जाके, ये प्रोसेस छोटा नहीं है। एक विचार आपने आज पैदा किया, ये परेश भाई, अब नजर आया आप मुझे, हमारे बहुत बड़े अभिनेता परेश गणात्रा जी बैठे हुए हैं, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, जिनकी टाइमिंग बड़ी लाजवाब है, मुझे दिखा नहीं था वहां से, नाउ आई कुड सी यू। तो ये आज़ादी एक दिन में तो पैदा नहीं हुई थी ना, उसके लिए वक्त लगा था। तो ये विचार, किसी ने सोचा कि हमें आजाद होना है, वो विचार बड़ा महत्वपूर्ण था। दीपक मुंद्रा ने सोचा ये विचार बड़ा आवश्यक है। अब इसे आगे कैसे ले जाया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आगे ले जाने के लिए हमें अपने दायरों को विस्तृत करना होगा। हमें उस व्यक्ति तक, हिंदुस्तान के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना होगा जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, उसे समझाना होगा कि ये जरूरी आखिर क्यों है। और हमेशा ये याद रखिए, आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ता है ना, उसे आजादी नहीं मिलती।
आजादी उन्हें मिलती है जो लड़ते नहीं है, पीछे होते हैं। वो तो प्राण दे देता है, वो तो फांसी पे चढ़ जाता है। आजादी उसे मिली जो पीछे खड़ा है। आप लोग अगर तैयार हैं कि आप लड़ाई लड़ेंगे तो आजादी उनको मिलेंगी जो पीछे है। और बहुत जरूरी है कि हम स्व के लिए काम नहीं करें, हम उसके लिए काम करें जो पीछे खड़ा है और जिसके लिए बेहद जरूरी है ये दुनिया, ये वातावरण। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सोचें कि चलो थोड़ी देर पसीना हो जाए तो हो जाए, एसी ऑफ रखेंगे, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमारे कुछ मित्र तो ऐसे हैं कि ट्रेन में कोई एसी कम करवा दे तो लड़ने पे उतर आते हैं और उन्हें कहते हैं कंबल लेके चला करो घर से, ठंड अगर ऐसी ठंड लगती है तो यहीं बैठे एसी हॉल में, माफ कीजिएगा। लेकिन क्या हम एयर कंडीशनिंग कम कर सकते हैं? अपने आप से सवाल कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं कीजिए। क्या हम कार्बन उत्सर्जन कम कर सकते हैं? अपने आप से सवाल कीजिए। क्या हम सामाजिक दृष्टि से अच्छा दिखने के लिए अपने फर्नीचरों का साइज थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं? नहीं। जहाँ 4 जग की जरूरत होगी हम 10 लगाएंगे, 10 की जरूरत होगी हम 12 लगाएंगे, 12 की जरूरत होगी क्योंकि हमारा जीवन कुल मिला के सिर्फ सोशल स्टेटस रह गया है और कुछ नहीं। जूते, आपको मालूम लकड़ी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? सिर्फ विजिटिंग कार्ड्स में नहीं, स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लोरिंग, पैनलिंग और सबसे ज्यादा फर्नीचर। हम सबसे पहले ये देखें कि हम कहाँ कम कर सकते हैं, मैं कहाँ कर सकता हूँ। एक साधु के पास एक महिला गई, अपने उसका बच्चा गुड़ बहुत खाता था और कहा कि इसे कह दो कि साहब ये गुड़ नहीं खाया करे, बहुत खराब चीज़ है। तो उनका 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद वो लेके गई और 1 महीने बाद जब लेके गई तो उसको कहा कि ले आई हूँ। तो महाराज ने कहा भाई तू गुड़ मत खाया कर, बहुत खराब चीज़ है। तो उस महिला ने कहा ये बात आप 1 महीने पहले भी कह सकते थे, मुझे 1 महीने बाद बोला कि यही बात कह रहे हो। तो एक आधा वाक्य ही तो था, बोले 1 महीने पहले मैं खुद भी खाता था। जब तक मैं न छोड़ दूं मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है। तो जब तक हम स्वयं न छोड़ दें हमें किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं। बहुत Thank you so much, sir. That was glad. I would. यही मेरी जीत है। वो कंबल वाली बीच में रखी तो ठीक है। Now, I would like to invite Mr. Navneet Manot to share his words. थैंक यू। सलेश भाई ने बोला कि वो 2 पैग लगाने के बाद शराबबंदी पे भाषण देते हैं। मैं तो खैर पीता नहीं हूँ, लेकिन मैंने दीपक को अग्री इसलिए करा बिकॉज मैं भी 1 साल से डिजिटल कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। सो इसमें मैंने उसको बताया, सो आई कैन जस्ट स्वाइप इट ऑन योर फोन एंड यू गेट द एंटायर कॉन्टैक्ट। एंड कभी कभी कोई एंड्रॉयड में या कोई पर्टिकुलर फ़ोन में NFC इनेबल्ड नहीं हो तो उसके लिए QR कोड भी है। सो आई थिंक कुछ तो कोशिश कर रहे हैं, छोटी सी, उतनी नहीं जितनी करनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, पिछले साल मानव जनसंख्या पूरे विश्व की 8 बिलियन हो गई, 800 करोड़ लोग। जस्ट टू पुट दिस नंबर इन पर्सपेक्टिव, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ, शैलेश भाई ने बहुत अच्छी बात बताई, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ तब जनसंख्या थी विश्व की 200-250 साल पहले, अभी 200-250 साल पहले 100 करोड़। 100 करोड़ से 800 करोड़ हम उस टाइम पर हुए जब हमने ये जो आपने AC की बात करी, ये जो आपने बिल्डिंग की बात करी, ये जो हम गाड़ी से आए, ये जो आज माइक से बोल रहे हैं, जो एक लैपटॉप बना रहे हैं। बाय द वे हर चीज़ हम लोग बोलते रहते हैं डिजिटल बहुत अच्छी है, पर ये जो आपका लैपटॉप है इसमें करीब 200 किलो के केमिकल्स लग गए होंगे। इसमें पता 22 किलो करीब केमिकल्स लग जाते हैं विच आर वेरी हजार्डस। 220 किलो के आसपास फॉसिल फ्यूल लगता है और हजारों लीटर अल्ट्रा प्योर वाटर लगता है, जिसके लिए बहुत सारा उसका कार्बन फुटप्रिंट है। आई कैन गो ऑन एंड ऑन। और अगर आप ये यूट्यूब पे लाइव कर रहे हो और सपोज ये बड़ा मूवमेंट बन गया, जन आंदोलन बन गया और बिलियन लोगों ने देख लिया, दीपक किधर है, अगर बिलियन लोगों ने देख लिया तो उसका कार्बन फुटप्रिंट, और आपने सर्वर पे उसको स्टोर किया राइट, उसका कार्बन फुटप्रिंट उतना ही है जितना 10,000 टैक्सी बॉम्बे में चल रही है, उतना ही है। एक डेस्पासितो करके एक सॉन्ग है जो सबसे ज्यादा प्ले हुआ है, उसका कार्बन फुटप्रिंट उतना ही है जितनी टैक्सी चल रही है बॉम्बे के अंदर। तो कई बार हम ऐसा हो जाता है डिजिटल का मतलब वो नहीं है, इट हैज टू बी है
विहंगम दृष्टि। तो ये 250 सालों में हमने अपना वर्तमान अच्छा बनाया। कितना अच्छा लग रहा है। अगर बाई चांस सपोज उन्होंने बोला सर अगर आज हम बिकॉज पर्यावरण की बात करें तो शायद पंखा ही चलाते, या पंखा भी नहीं चलाते, पंखी दे देते हाथ में, पंखी देते तो भी वो पेपर लग जाता, कुछ तो लग ही जाता। अगर वो कर देते या अगर ये नहीं होता तो डेफिनेटली विश्व कितना डिफरेंट होता। बट तो हमने क्या करा, हमारा प्रेजेंट अच्छा बना लिया, हमारा आज अच्छा बना लिया, इतना अच्छा लग रहा है, इतना कंफर्टेबल लग रहा है, सब आराम से आ भी गए और ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमने हमारा भविष्य उधार ले लिया या भविष्य को बिगाड़ दिया। और यही कर रहे हैं हम पिछले 250 सालों से। तो इंडिया में इस साल हम मोस्ट पॉपुलस नेशन बन गए, अमृतकाल के पहले साल में आ गए। $3 ट्रिलियन से सब लोगों को है कि अगले 25 साल में हम 20-22-25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। हम वही बन जाएंगे जो अमेरिका अभी है, करीब करीब इकोनॉमी के साइज में। लेकिन अगर हमने भी वैसे ही जी लिया, जो आप बता रहे थे कि घर का साइज या आपकी गाड़ी का साइज या आपके कपड़ों का साइज और नंबर ऑफ जूते अगर हमने कर लिया, तो आप सोच लिए प्लेनेट का क्या हो जाएगा और मानवता का क्या हो जाएगा आगे फ्यूचर जनरेशन का। एक नॉर्मल अमेरिकन करीब 300-350 किलो पेपर पर एनम यूज करता है, 13,000 शीट्स करीब। उसको आप वेस्ट बोलो कुछ भी बोलो, बिकॉज जो 250 साल का समय था उसमें जो कैपिटलिस्ट मॉडल था, पुराना वाला मॉडल डिफरेंट था। इसमें था एक्सट्रैक्ट मेक वेस्ट, एक्सट्रैक्ट मेक वेस्ट, एक्सट्रैक्ट मेक वेस्ट। ये पुराना वाला नहीं था जो हमारी सर्कुलरिटी इकोनॉमी पहले थी। इट वॉज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी, इट वॉज अ प्रिविलेज फॉर मी। मैंने सेबी की ईएसजी कमेटी, जो फर्स्ट ईएसजी कमेटी बनी, उसको चेयर करने का मुझे एक सौभाग्य मिला। शायद मे भी हम उस परिवार से आते हैं, उस जगह से आते हैं जहाँ पे यही सिखाया गया बचपन से। तो मैंने फॉरवर्ड में लिखा कि हम ऐसा सोचते हैं कि यूरोप ये कर रहा है, यूएस ये कर रहा है, बाकी जगह ईएसजी में ऐसा हो गया, टैक्सोनॉमी ऐसी बनानी है, पर ईएसजी पूरे विश्व को भारत सिखाएगा। चले जी, मैंने लिखा ई में अगर आपने आचारांक सूत्र के पहले 4-5 अध्याय भी पढ़ लिए तो आपको पूरा समझ आ गया एनवायरनमेंट के लिए क्या करना है विश्व में। हमको किसी दुनिया के बाहर वाले से सर्कुलरिटी, बायोडाइवर्सिटी कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे डीएनए के अंदर है, दिस इज पार्ट ऑफ अस। ये तो हम भूल गए, और इसलिए दीपक कॉम्प्लीमेंट हुई कि आप वापस वही चीज़ याद दिला रहे हो। हम वो है क्या, शैलेश जी का बहुत फेमस वीडियो है, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। उसमें से एक वो है, मेरे को याद है कि हम किस, हमारी सर्कुलरिटी इकोनॉमी क्या है, कि जो अभी टी शर्ट खरीदी है, ये जब थोड़ी सी खराब हो जाएगी उसके बाद बच्चे की टी शर्ट बनेगी, उसके बाद वो उसमें कुछ और बनेगा, कुछ और बनेगा, लास्ट में जब कुछ भी नहीं बचेगा, पोछा भी नहीं लग सकता है ना, तो इनका एक वर्ड है मारवाड़ी का, बोल देता हूँ डूचा, वो लोगों को समझ में नहीं आएगा। विच इज लाइक अगर कोई नाली से पानी निकल रहा है तो उसमें लगा देंगे उसको, पर उसको फेंकेंगे नहीं उस टी शर्ट को। ये हम हैं, ये हमारी इकोनॉमी है, और हमें वहीं पर वापस जाना है। विजिटिंग कार्ड खाली शुरुआत है, बट विजिटिंग कार्ड के लिए सिर्फ एक ही को कोई बोलेगा यार मेरे एक विजिटिंग कार्ड से कौन सा पेड़ में फर्क पड़ने वाला है। मुंबई में 30 लाख आपने कितने बताए ट्री थे, हर दिन कम हो रहे हैं, हर साल की तो बात छोड़ी है, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो एक राजा ने एक बार वो एक तालाब में ऐसे ही टेस्ट करने के लिए कि लोगों की इंटेग्रिटी और एथिक्स क्या है, जो आप बता रहे थे सलेश जी की, पहले अपना अपना तो कॉन्शियस वैल्यू सिस्टम सही करो। तो राजा ने बोला भाई कल सुबह 4 बजे सब लोग एक एक गिलास दूध डाल देना। हर आदमी एक गिलास पानी लेके चला गया। बोले यार इधर हजारों लीटर के अंदर मेरे एक गिलास पानी से किसको पता चला। अगले दिन राजा ने देखा खाली पानी था उसमें, दूध था ही नहीं। तो वो विजिटिंग कार्ड शायद एक इतना सा है कि एक इट्स काइंड ऑफ अ बिलीफ सिस्टम, ये वैल्यू सिस्टम को रोज आपको कर रहा है। जब भी अपन इसको टैप कर रहे हैं तो अपने को याद आ रहा है कि यार पर्यावरण के लिए करना बहुत जरूरी है। नहीं तो अभी भविष्य का तो छोड़ दीजिए, मतलब हमारे लिए भी किसी को आईपीसीसी की रिपोर्ट या किसी को यूएन की रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण की जो आज स्थिति हो रही है, मैं और नीलेश भाई की वाइफ काफ़ी काम करती है सदगुरु के साथ, तो हम वो सेव सॉइल वाले इनिशिएटिव में थे। तो पेपर की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द ट्रीज कट रहे हैं, अभी हमने नाम रखा सेव ट्रीज का, बट आप पूरा प्रोसेस सोचो राइट। जब वो बन रहे हैं क्या सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है उसका, और उसका इम्पैक्ट डिफॉरेस्टेशन। विश्व की पॉपुलेशन पिछले 50 साल में डबल हो गई, हम 4 बिलियन थे 8 बिलियन हो गए। इसी पीरियड में वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन आधी हो गई, आधी हो गई। मतलब हम डबल हो गए और आधी हो गई। अब आप सोचो अपना बड़ा घर है और उसमें अगर बाहर के बालकनी में या पोर्च में या कहीं आपके गार्डन में किसी ने आके अपना घर बना लिया तो उसको कैसा लगेगा। तो अपन ने वो ही किया है बाकी सब प्राणियों के साथ।
इसी टाइम में जो फ्रेश वाटर स्पेसीज है वो करीब 80% कम हो गए। अगर हम ये 20-25 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका की जैसे बने, अगर वहाँ पे बर्ड पॉपुलेशन 3 बिलियन से कम हो गई। 300 चिड़िया पक्षी जो थे, जितनी संख्या थी उससे आज वहाँ पर कम है। ऑस्ट्रेलिया में जब बुश फायर थी 1 या 2 साल पहले, आपने तो ऐसे एक फोटो देखी होगी, ऐसे आग लगी हुई है। कैन यू बिलीव 1 बिलियन एनिमल, 100 करोड़ पशु पक्षी मर गए उसके अंदर, 100 करोड़। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ, वी कैन फील इट। अगर आप बैंड्रा में रहते हो, बीकेसी में रहते हो, तो आप फील कर सकते हो उस पोल्यूशन को। आपको और कुछ आगे कोई आईपीसीसी की रिपोर्ट पढ़ने की या भविष्य की बात नहीं है, जब हम आज फील कर रहे हैं। तो वो जो एक कागज का कार्ड है, आई थिंक इट इज जस्ट अ मीडियम कि आगे हमको क्या करना है और क्या कर सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ है, जो है पता है एक कार्ड से क्या हो सकता है। तो पिछले साल पर्यावरण दिवस पर, 2 साल पहले पर्यावरण दिवस पर, हमने एक ऐसा ही ब्रांड निकाला, नर्चर नेचर, और बोला कि यार ये हफ्ते में जो भी आदमी डिजिटल एसआईपी करेगा, पेपर का यूज़ नहीं करेगा एसआईपी के लिए, इक्विटी में लॉन्ग टर्म एसआईपी करेगा, तो आपके लिए हम एक ट्री लगाएंगे हमारे पैसे से। दिस इज नॉट इन्वेस्टर एजुकेशन, वी विल पे फ्रॉम आवर पॉकेट। एंड 2 साल में आई एम वेरी हैप्पी टू से करीब करीब 50,000 पेड़ लग गए। तो एसआईपी से वैसे ही ललित जी, एक तो वो एसआईपी से उसका आगे का पेड़ बन गया बड़ा, बट एक ये भी 50,000 पेड़ लगे। तो इस साल मैंने सोचा पेड़ की जगह बहुत सारे लोग वो इनिशिएटिव कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा और भी कर सकते हैं क्या। हमने कहा अगर आप एक भी एसआईपी करोगे उस हफ्ते में, डिजिटली एसआईपी, तो करीब 250 ग्राम प्लास्टिक को रिसाइकिल करेंगे। इस साल हम करीब 4,000 किलो अगले कुछ दिनों में वो रिसाइकिल कर देंगे, बिकॉज वो जो एसआईपी आई थी। तो अब ऐसा लगेगा, आदमी सोचेगा यार मेरे एक एसआईपी से क्या होने वाला है, राइट, मेरे एक ऐसा, बट वो करते करते धीरे धीरे वो बड़ा नंबर हो जाता है। अगले कई वर्षों तक अगर हर आदमी इसी तरह से सोचे, तो कोई कारण नहीं है कि पूरे विश्व को, जो G20 में हमने नारा दिया वसुधैव कुटुंबकम, ये एक ही देश है ऐसा, ये पूरे विश्व में एक ही देश है ऐसा, ये एक ही संस्कृति और सभ्यता है। जब हम ग्रोथ मॉडल पर जा रहे हैं, $2,500, वी आर, आई मीन वी हैव बिकम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट अगर $2,000-2,500 पर कैपिटा देखेंगे तो विश्व के सबसे गरीब देशों में ये एक ही गरीब देश ऐसा है जिसको विकसित देश बनना है, लेकिन वैसा विकसित देश नहीं बनना है कि हम प्लेनेट को बर्बाद कर देंगे, कि हम आने वाली मानवता के लिए अच्छा नहीं करेंगे, प्राणी मात्र के लिए अच्छा नहीं करेंगे। G20 में पूरे 1 साल तक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और सब लोगों ने सिर्फ एक ही नारा दिया, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, फोल प्लेनेट इज माय फैमिली। मैं $2,500 से $5,000, बिकॉज वो जो ग्रोथ होती है 2,500 से 10,000 वाली, वो बहुत रिसोर्स इंटेंसिव होती है, बहुत रिसोर्स इंटेंसिव होती है। बट मैं वो ग्रोथ नहीं करूंगा जो चाइना ने 30 साल में करी है, मैं वो नहीं करूंगा जो जापान ने उसके 20-30 साल पहले करी, मैं वो नहीं करूंगा जो कोरिया ताइवान ने करी, मैं वो नहीं करूंगा जो यूरोप ने 100-150 साल करी, मैं वो जो डेफिनेटली नहीं करूंगा जो यूएस ने 100-150 साल करी। हम एक दूसरा ग्रोथ मॉडल बनाएंगे, वसुधैव कुटुंबकम, परस्परो ग्रहो जीवानाम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी कल्चर है। और ये अगर हम पूरे विश्व को सिखा पाए, तो अगले हजारों साल भारत के लिए बहुत डिफरेंट रहेंगे। इसी वीक 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का भी जन्मदिन था, और 2 लाइनें उनकी याद आ जाती है। एक तो वो, व्हाट यू डू टुडे विल डिसाइड योर फ्यूचर, व्हाट यू डू टुडे विल डिसाइड योर फ्यूचर। तो दैट विजिटिंग कार्ड इज जस्ट अ मीडियम, कि आज हम ये कर रहे हैं कि हम पर्यावरण के लिए गलत नहीं करेंगे, नहीं तो आर फ्यूचर विल नॉट बी गुड। एंड दूसरा उनका बहुत अच्छा है, बहुत ही फेमस है, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी द वर्ल्ड। हम चाहते हैं कि विश्व में ऐसा हो, हम चाहते हैं कि शुद्ध हवा मिले, हम चाहते हैं कि शुद्ध पानी मिले, हम चाहते हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए सब कुछ अच्छा हो, लेकिन वो नहीं हो सकता है जब तक हम नहीं करें। आपने इतना अच्छा बोला कि वो बाकी दूसरे लोग करें, मेरे को नहीं करना है, वो बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक इट इज जस्ट अ कमिटमेंट टूवर्ड्स दैट बेटर फ्यूचर, इट्स अ कमिटमेंट टूवर्ड्स अनदर थिंग। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, आई एम श्योर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विल से वी कैन नॉट ट्रस्ट योर डेटा प्राइवेसी, कोई बोलेगा ये हमको, वैरायटी ऑफ रीजंस। मैं ऐसे ही सोच रहा था, मैं और नीलेश भाई बैठे हुए कई इवेंट्स में जाते हैं, शैलेश जी जैसे तो नहीं आते, हमारे को सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं चाहिए, बट आप लोगों के आशीर्वाद से कई बार ऐसा होता है 25-50 एक साथ। अल्पा बेन, अभी आपके इवेंट में मैं आता हूँ तो एक साथ 25-50 लोग आएंगे कार्ड एक्सचेंज करने, राइट। अभी उसमें इट्स नॉट दैट ईजी, बिकॉज आप जा रहे हो, दूसरा स्पीकर स्टेज पे जा रहा है, तब तक आप कैसे, तो हमको सोचना पड़ेगा वो सब चीज़ों का। बट अगर उद्देश्य सही है, अगर अपना लक्ष्य सही है, तो बाकी चीज़ें ठीक होती रहेगी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, बिकॉज मुश्किलें पक्का आएगी दीपक जी।
और बाकी सब लोग है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो अगर if we work with that, if we work with that deep sense of purpose कि एक सही पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो आई थिंक बाकी सब चीज़ें अपने आप बनती जाएगी। और शैलेश जी ने बहुत अच्छा कहा कि सिर्फ यहाँ पर मत रुकिए, और जिस तरह से उन्होंने आई थिंक हम सबको क्या कहूँ मैं एक तरह से हाँ प्रोवोक किया कि क्या विजिटिंग कार्ड की बात कर रहे हो, क्या होने वाला है, मतलब गाड़ी में आए हो, मेरा बेटा मेरे को बोलना नहीं चाहिए, इट्स वेरी एम्बेरसिंग फॉर मी। जिस दिन ऐसे ही उसने कहीं पढ़ा होगा दैट आई गॉट अपॉइंटेड फॉर ESG, या वो कहीं ना कहीं पढ़ता रहता है मेरा आर्टिकल, वो हमेशा एक ही चीज़ बोलता है, बिजनेस क्लास में तो ट्रैवल करते हो, मेरे को ज्ञान मत दो ESG का। बिकॉज ही थिंक्स कि वो 2 आदमियों की सीट है, वो अगर होता तो इतना कार्बन इमिशन कम हो जाता है। मैं लंदन में कभी भी अगर होता हूँ उसके साथ में, ही विल ऑलवेज एंश्योर आई टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। In 2047, the true test of India, whether we have become a developed country, is not that every poor person will have a car. The true test of India is people in this room will travel public transport. Thank you so much. God bless you. Thank you so much, sir. Now I would like to invite again Mr. Deepak Mundra to come and start with the event. So actually, after hearing all three of them, I'm feeling my blood circulation is little fast now. And I agree, with Salesha. There is a mistake in my thought. It is no more, we will no more chase mini Jan Andolan. We will chase it as a Jan Andolan. And I am very confident with, these, people, Salesha, Navneet Nilesh Bhai, and आज हमारे Anil Singhvi ji, आज he is traveling, so he is not there. He is again a very good thought leader. So with four of them, guiding us, I think no one can stop us to, make it a Jan Andolan. So thank you. Really, it is thought provoking, and we will ensure that, we follow the way path, the what you are suggesting. We have that mic also. Now it's already 12, so we have some mementos for our thought partners. I would request all three of you, so please calm down, and so that we can save time. And from your hands, would like to, give them. Yeah, please. So, Trace. So how these are arranged? ये अरेंज कैसे है? ये रख दो ना, एक एक करके दे देना। एक ट्रे लेके आ जाओ। नहीं। So, Som Saini, big round of applause. Sanjeev ji Maheshwari. Kirit Bhai Shah. Next is Dinesh Thakur. Next is Roop Bhotara. Bhaumek Shah.
नैना महावर, जितेंद्र जैन, तो दीपक भाई, आपने ये जब पहली मीटिंग हुई थी तो आपने कहा जन आंदोलन वर्ड यूज किया था और साथ में ये भी कहा था कि जन के साथ साथ जैन आंदोलन भी होना चाहिए। जयेश आश्रा, अमित लाहौटी, डोगरा साहब, परेश गनात्रा, परेश भाई, समीर अग्रवाल, अनुराग कटारिया, धीरज खंडेलवाल जी, हाँ, गणेश तिवारी जी, वैभव मित्तल, संतोष माश्वरी जी, श्रवण जालन जी, विकास सचदेवा जी, ललित जी मुंदड़ा, नेहा काबरा, कौशल रजिस्ट्रार, नेहा काबरा, प्रशांत बंसाली, किशन कनोडिया, now the only couple in our thought partner team, Shilpi and Vivek. Now I'm announcing my own name. This is for thought partners. Thank you. Now I would request each and every thought partner to express the views, because we are running late of time. To request be precise, but let it be one by one. I am going one by one only.
I have seen this kind of initiative in the awareness kind of things from last 15 years. टेरी के टाइम से ऑर्गेनाइजेशन से planet alert, we are talking from last 15 years, but hardly we have seen the action. But this time action is seen. हमेशा बातें हुई हैं, लेकिन एक्शन जो हमारे कार्यकलाप में और जो हम छोटी छोटी चीज़ हमारी फैसिलिटी के रूप में, हमारे डेली यूज़ के रूप में और हमारे कार्यक्रम में रूप के रूप में देख रहे हैं, और ये एक्शन है जिन्होंने छोटा सा शुरुआत की है और एक काफ़ी बड़ी शुरुआत है। मैं पूरा पूरा क्रेडिट दीपक भाई को दूंगा कि एक बड़े इनिशिएटिव को शुरुआत करने के लिए और एक्शन के साथ में विद एक्शन, ग्रेट इनिशिएटिव। कॉम्प्लीमेंट्स टू दीपक। आई थिंक सभी लोगों की तरफ से हम लोगों का आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। I think what Navneet mentioned actually be the change that you want to see. I think that's the most important thing for all of us. I personally feel, I think we have been touched with the exuberance and the enthusiasm of Deepak for pushing us on this particular subject. I was a bit skeptical initially, just the way I think others have been, that whether this would be really sufficient or whether this would get us the right support kind of a thing. But on persistence of Deepak, when we actually moved across and spread messages to our friends in our broadcast, I had about 125 plus people actually responding to be part of this group, and I was pleasantly surprised, that this is the kind of understanding that people have, want to contribute to this cause, but possibly don't have the opportunity. And I think you have set this platform, and I'm sure, God bless, God willing, everything would be well. Thanks. Thank you. I repeat, clapping is acupressure also. Thank you, Deepak Bhai, for making me a part of this initiative. We always everybody want that we give back to the society, but sometimes we don't have a forum or an opportunity which can help us to do something for the society at large. The small initiative, step by step, which has now been incubated, I'm sure, as you mentioned, it will take a Jan Andolan kind of a movement. And here, most of the gurus are setting up, the investment gurus, who talk about power of compounding. And I'm sure this is going to compound many, many times as we progress ahead. Thank you. थैंक यू दीपक। लगता है कोई पिछले ज़माने में कोई अच्छा काम किया था कि आपने ये इनिशिएटिव में योगदान करने का मौका दिया। आई थिंक हम सोचते ही रहते हैं कि कुछ करें सोसाइटी के लिए, कुछ वी आर टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम द environment and we should give back. I think this is the opportunity which has come to us, and I think शैलेश भाई हम ये करेंगे कि इसको आंदोलन बना के सभी को समझाएंगे कि ये ज़रूरी है। आई थिंक छोटा छोटा काम से कोई बड़ा काम हो सकता है। दैट्स व्हाट दीपक थिंक्स, एंड आई थिंक वी विल गो विद यू। थैंक यू। So again, everybody is saying Deepak, which is true as well. I think it's a small beginning for all of us. God has given this gift. We all should be there to sort of save it. Thank you. Would like to thank Deepak ji, our mentors, patrons, thought leaders, and everyone who has made this event app launch very successful. And let's work towards making this not a Jan Andolan, a big Jan Andolan as Deepak ji wants it to be. Thank you, everyone. Thank you, everyone. I think our Deepak bhai is really a big connector who is connecting the broken dots of all of us. He has brought us under one platform, and heavily supported by our three gurus, Sailesh bhai, Navneet bhai, and Nilesh bhai. So we are sure that this is going to be a big Jan Andolan, not only in India but across the world. And जैसा हमारे गुरुज ने भी बोला है कि ये सिर्फ एक टोकन ऑफ आवर इनिशिएटिव है, but we have to be very proud that in every day-to-day activities since the morning when we are waking up till the time we are going to the bed, how we are contributing to the mother earth. So thank you, Deepak bhai, for all these wonderful initiative, and we are hopeful that it is going in a big way in different forums and different forms. Thank you, everyone, and God bless all of us. पिछले 3 महीने से जो डिस्कशन हुए आपके साथ, मीटिंग में भी बात हुई,
तो जो इनिशियल फेज था जिसको स्टार्टअप फेज बोलते हैं वो खत्म, आज से ग्रोथ फेज शुरू। और जो भी हमने बात की थी कि ग्रोथ फेज में हम कैसे ग्रो करेंगे, हम क्या बड़े सेलिब्रिटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, क्या अपने ग्रुप के लोगों को और कैसे इन्वॉल्व करेंगे, जो भी डिस्कशन हुए हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है और आज से शुरू हो। थैंक यू। Thank you everyone for part of this initiative, and I must say all of you are here in the Sunday morning. You have that thought and believe we can change the world, and I am very sure that this initiative will be a big initiative in the coming future. Thank you. सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं दीपक का भाई, थोड़ा सा इमोशनल हूं आज इस मोमेंट पर, की बातें भी कर सकता हूं। दीपक ने बताया नहीं सबको, घर में बात चलती थी, इसका नारा चल रहा था 3 महीने से कि ना कार्ड लूंगा ना लेने दूंगा। मैंने आज वो रहस्य यहाँ पे उजागर किया, नंबर 1। एंड दीपक का मतलब जोत भी होता है, हमने गाना सुना है, जोत से जोत मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मुझे लगता है कि स्कैन से स्कैन मिलाते चलो और DMI की गंगा बहाते चलो, ऐसा मैं सोचता हूँ। और जो हमारे थॉट पार्टनर मेंटर बोर्ड वगैरह यहाँ बैठे हैं, तो शैलेश जी से मैं अपोलोजाइज़ करते हुए कोशिश करूँगा गाने पे तुक्का जोड़ने की, कि वो बड़े अच्छे लगते हैं, गाना सुना होगा सबने। बड़े अच्छे लगते हैं ये मेंटर बोर्ड में पैटर्न भी इंक्लूड है शैलेश जी। ये बड़े अच्छे लगते हैं ये मेंटर बोर्ड, ये थॉट पार्टनर्स और ये वॉलंटियर्स और क्या, और DMI। So that is all, and all of you are thrilled, so am I। और इस ऐप की लॉन्च पर सब तरफ एक खुशियाँ चाहिए। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। Thanks, Deepak, for this particular initiative. We need to ensure the continuity of this particular project, because many point of time we are starting with a big way, but then the continuity will not be there. So we need to ensure that part. Yes, it should spread and it should go in, I can say, each and every person's heart. Yeah, we need to do this particular work. If we will do that, we will able to achieve our mission. Yeah. Thank you, Deepak ji, for making me a part of this and for making all of us a part of this amazing initiative. It's a great initiative with content management, contact management, as well as social impact. Thank you. Thank you, first of all, Deepak, for being part of this wonderful initiative. मुझे आज भी याद है पहली बार जब दीपक ने फर्स्ट टाइम बात किया इस इनिशिएटिव पे, हम बैठे शांति से। सो माय फर्स्ट इम्प्रेशन वाज वाओ, फैंटास्टिक आइडिया और बहुत शानदार है। पर मैं स्केप्टिकल भी था कि बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारे कार्ड स्कैनर और बहुत सारे इस तरह की यूटिलिटीज़ ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो इसको यूनिक कैसे बनाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है दीपक और टीम ने जो है मिलके एक एक चीज़ जो इसमें ऐड किया, विच मेक्स इट फैंटास्टिकली वेल डिज़ाइंड ऐप, स्केलेबिलिटी और वर्सेटिलिटी की आप वर्ल्ड में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं उसको, इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू इंडिया। तो दीपक जी ने जब ये पहली बार आइडिया दिया तो थोड़ा स्केप्टिकल था, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये दीपक भाई है, जो बोलता है वो तो करता ही है, जो सोचता है वो तो डेफिनेटली ही करता है। तो इस आइडिया के साथ जो इस तरह से डिस्कशन शुरू हुए और आज हम इस जर्नी में यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आई एम श्योर, मुझे बहुत विश्वास है कि DMI का जो इनिशिएटिव है वो वाकई बहुत बड़ा जन आंदोलन बनेगा और आगे जाके बहुत सक्सेसफुल भी होगा। विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू। नमस्कार, मैं नैना। बहुत छोटी हूँ इन टर्म्स ऑफ सामर्थ्य। हमारे सामने बहुत दिग्गज लोग हैं, बहुत ज़्यादा बोलने का और बहुत ज़्यादा कुछ करने का मुझे नहीं लगता मेरे में सामर्थ्य है। यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं ये बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सेल्फिश होने की भी ज़रूरत है। सेल्फिश नॉट दैट कि सब कुछ मेरे लिए हो, बट जैसा शैलेश सर ने बोला कि हमारी जनरेशन्स के लिए भी हमें कुछ जोड़ना है, और वो धन ही हो ऐसा नहीं है, हमें मदर नेचर को कंट्रीब्यूट करना है। आई एज ए मदर व्हेन आई सी कि जब मेरा बच्चा मॉनसून में और स्पेशली विंटर्स में उसको कॉफिंग होती है, राइट,
और हमें पता चलता है हम व्हाट्सएप ग्रुप पे दूसरी मदर से और पेरेंट्स से भी जुड़े हुए हैं। आधी आधी क्लासेस नहीं होती हैं स्कूल्स में क्योंकि बच्चे नहीं होते हैं, and that's where we see the impact of what we are doing today. Is it what we are going to leave for tomorrow for our kids and for their future generations? So yes, it is a time that we need to be selfish, think about it, and think positive how we can change ourselves for future. Thank you. नरेश भाई, सबको आपको सुनना है, सबको सुनना है, अच्छा बोलो। मैं तभी बोलता हूँ जब मुझे चेक मिलता है। हाँ हाँ वही है, हम आर्टिस्ट की वही तो बात है कि जब तक चेक ना मिलेगा हम बात करते नहीं हैं। सबने बहुत कुछ बोल दिया है, बस इतना है कि जो बोला है उसको करके दिखाना है। थैंक यू। तो हमारे दीपक जी के बारे में सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली है, लेकिन मैं एक दो चीज़ें बताऊंगा जो हम सब शायद एग्री करेंगे। आपको पता है दीपक का सबसे बड़ा सुपर पावर क्या है? सोच तो है ही, सबसे बड़ा सुपर पावर है फॉलो अप। एम आई राइट? क्योंकि आदमी का आइडिया एक चीज़ होता है और फॉलो अप करके काम कराना, रिलेंटलेस फॉलो अप, रिलेंटलेस फॉलो अप, और इतना प्यार से अपोलोजाइज करेंगे कि मैं दूसरी बार भेज रहा हूँ, सॉरी। आई लव दैट एंटायर थिंग एंड आई थिंक आज हम लोग सब जो बैठे हैं, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडिया बट बिकॉज ऑफ द फॉलो अप ऑल्सो। यू एंड योर टीम ब्रिलियंट। और ये सिर्फ इनका एक अकेला पैशन नहीं है। अगर आप लोगों ने किसी ने देखा है, किसी को, काफ़ी लोगों को पता है खाना अच्छा बनाते हैं। आई वॉज सरप्राइज, कभी 2020 में लॉन्च किया था ड्यूरिंग कोविड टाइम। I was so surprised to see you've got 6,500 subscribers on your channel. You were struggling to get the first 100, I remember. Okay, so, you know, and he's got a health group and he's got a stock ideas group. I think a lot of us have made money through the stock ideas group also, right? So, Deepak, more power to you and your entire team. And this is a great initiative. Thank you for including me. Thank you. Thank you, Deepak, for adding me into the group. It's a wonderful initiative. And I'm sure, I think what we're going to do go a long way in doing what we're trying to do. And I think as what Shailesh bhai mentioned, I think it will have to come from within you to stop you not using the paper wherever possible. Thank you. तो सर मेंटर्स की बात सुनने पे मेरे को अभी ध्यान में आया था कि मान लो जब घर में रिसोर्सेज कम होते हैं और बच्चा एक रोटी ज़्यादा खा लेता है तो माँ एक रोटी कम खा के उसको एडजस्ट कर लेती है। यहाँ पे भी मैं ये सोच रहा हूँ अगर हम लोग जहाँ पे नहीं बचा पा रहे हैं या लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वुड को और इन्वायरमेंट को, एटलीस्ट टू एन एक्सटेंट वॉट एवर कमिटमेंट और वॉट एवर सपोर्ट वी कैन गिव, that may be counted also. I agree and thank you. Thank you, Deepak sir, for making part of this initiative. We all have spoken many things, so nothing really left for me to add. There's only one thing: it's a small step. Let's make it big. Just to extend what Dinesh has said, let's take a pledge and be the change what you want to see. Thank you. Only one thing, I will try to consume less from today onwards. I think all thought partners who are present here have said something, right? Now, one important thing, when Rima came here and said, I actually realized that the last few months, I have actually not given, enough time to the family. My wife Chintan also sitting here. So I need to thank family. My brother also sitting here. He also, all family members in last, gatherings last 3-4 months, I am generally absent or going for only very, short period. So Rima and Uday also here. I realized we have stopped going for long drives, actually, which we used to, if I listen you, I used to spend, waste lot of fuel. In a way, I am happy, that fuel is also saved. But at the same time, I realized that activity is missing. So I also thank my family. I thanked everyone around who is involved. Also now thanking family, wife, kids, brother, and entire family. Thank you. So we have, 2-3 thought partners who are away.
and they have sent their video. This is one minute video. I will just play that. सभा में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों को मेरा अभिवादन. As we are aware that today world is facing a pressing environmental crisis and it is our collective responsibility to take meaningful steps towards its sustainability. In any business meeting or any networking event, exchange of business cards is a common practice, and the paper used in printing those cards is a burden on our environment. The app Save Tree VC is a step in the direction to address the issue and to protect the environment. ये ऐप न केवल पर्यावरण के हित में काम करेगा, परंतु साथ ही साथ यह बेहतर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की सुविधा भी प्रदान करता है. इस पुनीत कार्य के लिए दीपक मुंद्रा जी एवं उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद. धन्यवाद. Good morning, friends. What a pleasure that we all are gathering today to launch a Save Tree app. This is basically an app inspired by all of us, especially Deepak, who was instrumental in terms of designing the thought process and involving all of us to be a participant in this. This is an efficient contact management system without any papers or sharing the visiting cards. The thing is that it becomes a lot more organized. You can share the required details. You don't need to share everything. At the same time, since the app is developed in-house, fully data secure, no contact sharing, no information sharing, no monetization, the app is free for all of us. The initiative is to save trees. Idea is to make it a mini Jan Andolan so that everybody starts using it, and for the betterment of the society, for the environmental reasons, it's much more important that we stop using paper cards and be environment friendly. Use this app. Thank you. Thank you for gathering on a Sunday morning. Thank you, guys. Dear friends, good morning to all of you. It's a great privilege to have joined this great initiative by Deepak Bhai and all of you here. My apologies that I'm not able to join you guys. The initiative, I think, is larger than life. And why I say it is because in our Shanti mantra, there are two elements that we have prayed. One is Vanaspati hi Shanti, the other is Prithvi hi Shanti. And if you look at the evolution of how we used to record our contacts, from a pocket diary, we moved to a card which was paper-backed, and from paper-backed, we moved to plastic. The paper-backed and the diaries used to cut trees, which used to disturb the Shanti of the Vanaspati. Similarly, plastic usage used to disturb the earth because of its bio non-degradability. This particular initiative saves both plastic as well as the tree usage. And that's why it's greater than life, it's larger than life, and it's a great privilege to have all of you with us in this great initiative, in this great journey. My apologies once again that I'm unable to join, but let's take this forward in the right earnest. Thank you very much. Thank you everybody for sharing your ideas and thoughts. Now, before I invite Mr. Dheeraj Khandelwal to honor us for delivering the vote of thanks, we as a volunteers would like to raise a voice for this Jan Andolan. आओ मिलकर पेड़ बचाएं, व्हाट्सएप को हम काम पे लगाएं. धीरज सर, प्लीज. I think after hearing all the three mentors over here about the message which he given, कि आज हमारे को सोचना है कि just not only the exchanging the card, we have to use the app, and even the Sailesh bhai have already said that कि हमको हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ सोचनी है. इवन हम लोग जब
ब्रश भी करते हैं तो टैप को छोड़ देते हैं, पानी चलता रहता है। इवन वी कहीं ना कहीं जो कार पूलिंग की बात करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, और काफ़ी ऐसे छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, जो छोटी छोटी वर्किंग हैं, जो हम लोग को उस चीज़ से सीखने की ज़रूरत है। और ये पूरी मेंटरशिप ने एक हमको पूरा एक से चेतना जागृत किया कि हमको हमारे एनवायरनमेंट को जगाना है और हमारे फ्यूचर के लिए सोचना है। ये आज हमारे बेनिफिट के लिए है और हमारे फ्यूचर जनरेशन के बेनिफिट के लिए है। और मैं इन सभी तीनों मेंटर्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत एक जन आंदोलन के लिए प्रेरित किया है। और जो हमारे यहाँ पे दीपक भाई हैं, जो मैं आप सबके बिहाफ पे, हमारे पूरे थॉट पार्टनर्स के बिहाफ पे और आपके बिहाफ पे एक ही पर्सन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने एक जन आंदोलन के लिए सोचा और आज से आप हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए और एक आगे की रणनीति, क्योंकि बिकॉज हम लोग इवेंट्स होते हैं, वर्किंग होती है, हम लोग ने बहुत सारे अवेयरनेस ड्राइव भी देखी हैं पिछले 15-20 सालों से, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक्शन देखा है यहाँ पे, पूरा पूरा एक्शन रेडी है कि आप उसको जागृत करें, कम से कम एक जन आंदोलन बनाएं। और जो अपना चंद्रशेखर आज़ाद ने हमेशा पहले बोला था, आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा, हमारे दीपक भाई यहाँ बोलते हैं, आप जस्ट मेरे को केवल टाइम दो, आपके फ्यूचर को एक सिक्योर हवा दूंगा और एक आज़ादी दूंगा। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव दीपक भाई ने किया है और आप सबको धन्यवाद यहाँ पे आए और इसको जोड़े। और आप सबसे अनुरोध है कि एक वाकई में जो यहाँ पे थॉट प्रोसेस पैदा हुआ है कि हम सब जनों को, एक एक आदमी को इस तक पूरा पहुँचाना है, लोगों तक पहुँचाना है और कहीं ना कहीं इसको जन आंदोलन बनाना है। कहीं ना कहीं हमको जो सेफ ट्री की बात जो हम कर रहे हैं, रियली में कम से कम यूज़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करके और सबको यूटिलाइज करके इस ऐप को और आगे करना है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन ओवर हियर एंड थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। I would like to invite Ms. Deepak sir for the photograph with the mentors and patron. सर आप I would like to request all thought partners to please come on the stage after this picture. All the thought partners, I request you to come on the stage. Give it to you with a pinch of salt. That's what I'm saying. You are on the giving side, not on the दीपक भाई